Hello guys. Hello. Hello. Hello guys. Hello. क्या हाल है भाई? क्या हाल है गाइस? क्या चल रहा है? हाय. Oh, hi Adarsh. Hi Swaraj. Hi Tungsten. Hi Ayush. Hello Malav. Hi Emily. Yes Malav. स्कैम तो कर दिया था वॉच पार्टी के ना. अरे भाई देखो गाइस क्या हुआ ना मैं अम, थोड़ा सा खैर छोड़ो. What's important is that Malav, you guys have qualified for APAC once again. Congratulations to Global, Malav, and Eraser and everyone. Hey, chat speed has the healers. Prediction King Legends. क्या बात है Tungsten? Just want to see Enigma against APAC teams. Yeah, it is Jaglo. That will be very good. That will be very good. Thanks, Vajju bhai. Thanks, Vajju. I मतलब me and Malav were talk. I think me and Malav talked every day in the past 3-4 days. Bhavin, fuck off, this is my stream. And it was so good. Like, and obviously today it panned out as it should have been for um, Global, as me and Malav were talking. And it feels so good, man. Because I think, and I've always maintained this, that you need sort of that play style. मैंने सुना है सर्जिया आफ्टर ईगो ऑल्टर ईगो है ग्रुप्स में प्लेन्स में मिथ बूम सेबरस है बहुत ज़्यादा टफ है. हाँ टफ तो है शान बट चलिए जस्ट सब आया जस्ट इसलिए. ए थैंक यू फॉर द सब. Congratulations, congratulations. I mean, not yet. We want to see. We want to see another 3-0 maybe. Maybe not 3-0. Come on, 3-2. Like tomorrow's match should go 5 months in honor of every match that has been so far. It's been so nail biting. This has been one of the closest. This has been the closest SCS so far. ये रहा क्या चिल्लाया भाई. Sorry Cyber. So this has been one of the this has been the best SCS, the best VCC so far. Phase 2 absolutely amazing. Hi Godspeed. Hey, तो एक group stage बदला needed now. हाँ. I mean, phase 2 absolutely awesome. Did you guys see how competitive Valor and Reckoning were against the like the big wigs, and you see how, let's say, VLT sort of struggled. Godspeed, no way 3 J. I won't say 3 J. I think I'll go with 3-1 G. Who will win your predictions? I will talk about this. Malav aa raha hai. Malav, are you here? Bye. Malav, hello. Malav, is Malav here? Ajo TS, okay, TS. I'll come TS. Okay. Which one? Atmos, right? Most teams stepped up this SCS. Yep. You were moved. Sound resumed. Hello. सलाम गॉडस्पीड भाई सलाम. सलाम. कैसे हो आप? बस आप बताओ भाई क्या चल रहा है? बस हैप्पी. Godspeed write the script for finals. Hey, I was not alone. Malav was part of it yesterday. Malav stuck to his words. Yeah. I mean, I'm glad it worked out. But मजा आया. Someone finally punishing OG for their lack of fracture. I was baffled why no one was picking fracture against OG when they were, especially when they were leaving it out in the open, right? I mean, Yeah, it's I think one of the bigger problems with our region, including us, is that not many teams like have found the not mastery on maps other than like your vanilla maps, including yeah. us.
we're not the best team on Breeze, we're not the best team on Fracture, and that can be your ace of spades against the correct team. Now you can pull that as a pocket pick, and no one would expect you to play it, True. and that can work out very well against certain teams. So I think a growing problem for our region, including us, is map pool, which is something that we will be working on the minute I get some level of downtime away from tournaments, where I'm not necessarily concentrating on, like, preparing to beat the next team we're playing. Yeah. I think you guys. So if you win tomorrow, right? Yeah. Then you have ample time. If you don't win tomorrow, Then you have 5 days, and then you have to prep for 3 other teams as well. yeah. 4 days, I think. 9th ko chalu rahe planes, I think. Saying we are not the best team in Breeze, VLT crying in corner. See, No, that win against VLT was honestly, VLT's fundamental understanding of Breeze has been lower than expected with the newer comp, and we anti-started that. true. Also, I mean, acceptance is the first step of improvement. If Oh, you yeah, know you're not the best, then you know you have to work on it. And I mean, that is just being honest with your own self. Like, it doesn't mean you won't win. Like, nowhere in the script, nowhere in the goddamn script is it written that only the best team wins. yeah, so many times upsets happen for that reason. Exactly. So you may not be the best on breeze, but you damn well know that you will fight and Yeah, you will win. but like I was just thinking about this. Like, if we lose that one round against Revenant on Haven at 12-11, Ooh. we're potentially staring at getting eliminated by twos, like with a 1-2 score line, and from there, for the team to rally themselves and cleanly, pull out series against two of the, what you would say, stronger teams, not necessarily, Yeah, is something I've been really proud of the boys for. true. Really, Closer. really proud of Yeah, them for. guy closer. But so isn't it reminiscent though Yeah, yeah, of 100%. your Yeah, VCC one run? How you guys yeah, were close to being eliminated by Revenant, same then guys. got Yeah, particles. Hopefully not no play no, ins this time. hopefully not. And your stream is black Black. screen. I Yeah. know. I purposely सब कुछ हटा रहा हूँ व्हाट्सएप ये वो जो भी खुला हुआ है मेरा सब हटा रहा हूँ अभी कोई सबूत नहीं देखना चाहिए कुछ भी ये सब हटा रहा हूँ There's a really interesting question in chat, या which is like, do you think OG made a blunder by banning Fracture? I mean, they बाय had a नॉट map बैनिंग in a map फ्रैक्चर by not banning Fracture. I mean, one, they've never banned Fracture. Two, like, them not picking Breeze was the bigger this thing for me. Like, for me, I would have just put trust in my team's ability to win the map. oh but our veto was correct I Yeah, did yeah, pick a cent because yeah. I know and I know if the veto panned out that way that G will win and Yeah. Like, when the veto came through, I was like the only message I sent on the group, and Bhavin told me that this is the veto. I said lovely. yeah I remember we were talking after the match Yeah. like that this was the video and like yeah I said congratulations even back then I was like yeah. Like see obviously vetoes I think I've been massively disappointed by vetoes in this tournament right Especially against us. I think a lot of teams yeah against us vetoes. I think I've been very disappointed hi Moonpai I've been very disappointed man with the map vetoes I think so we were talking about OG as well how Yeah. EG gave Ascend. OG a chance yeah again the same thing about fracture right imagine Yeah. if EG would have picked fracture hi see hi Saksham hi Magnus but yeah again the same thing I mentioned time again see you But have do to yeah. yeah Yeah, I you understand. Go on, go on, go on. you have to I'll ask. understand if a team has not played a certain map ever and it's a particularly new team there's no way they will have something prepared for an already established team it's a possibility it's a likelihood not even a possibility Yeah. it's a likelihood but for an absolutely new team it's more important to jot down the basics and to prepare the maps that they think will benefit the team most and which are going to be played the most right Yeah, absolutely. But like, I guess it's. But do you think a lot of the reasons that we see interesting vetoes panning out in a region is because of how mixed the results are and how competitive the region currently is?
because that could be one of the reasons why, as a team, you shy away from going to a particular map, right? You say that, Maybe, like, man, but I just feel this yeah, time in this SCS, people have been found out by a lack of research. Okay. yeah, To be very honest, like they just went with recency bias, as you would say, right? Like, for example, if we talk about Reckoning's vetoes, is that Malav Godspeed? Yeah, guys, someone please write whoever, like, this is Malav, right? Obviously. And Indian Valorant fan, fuck off. मैंने वही delete किया. Yeah. Don't do this, Indian Valorant fan. If you're an Indian Valorant fan, that means you should support both, because Shooter is also playing for an Indian org, and even if he plays for any org, he's still a fucking good player, and you have to support all good players, man. You have to support bad players as well. मेरे जैसे लोगों को भी support करो, but like good players as well. But yeah, I was talking about the recency bias. So against our team, we beat you guys on Haven. Next team bans Haven against us. Okay. We beat OG on Ascent. The next team bans Ascent against us. I mean, I was like, dude, we're not that good. I told my team, how do I tell them that we're not that good? I was actually watching. So obviously we do prep, right? Yeah. So I watched your game against this thing. I watched you guys playing Bind against. OG? Yeah, yeah. Oh, we were a calamity. So the thing is, our playstyle, what I told the team to focus on, that was there for 4 rounds. Yeah, I think towards the start you'll start off really hot. Yeah. But then, like, after that initial contact, like, cancel करके पीछे आना है तुम्हें, relax करना है, and then read करना है. Like, I guess that wasn't fully. They weren't fully able to establish something like that, and they weren't able to, like, pull that off. Which is, I actually wrote this down in my notes before I spoke to Bhavin, like how we should actually play attack against these guys if you end up picking the bind. And I learned from whatever mistakes y'all were making. Yeah. So, but kudos to you guys. Y'all had some really cool pocket setups with the breach I and know, the right? Sky utility. Yeah. वही तो काम है मेरा, वही तो आता है मेरे को और कुछ. There's this one really nice thing that I like. जब ये TP से I think Sky Wolf या फिर Flash आता है, and the breach trems where the chamber put his TP originally, even if the chamber TPs out, which is like a good anti-strat. I really like that to punish like the chamber player. And the thing is, Malav, okay, I'll let it my secrets. This is not new. I did this with the old RG when I was the coach of that team in October, when we had the triple initiator comp. The same strat, Sky from B-Long, Octagon, Yeah. dogging, and breach from showers, stunning, and then we were pushing. The difference is the players. The players that I had then versus the players that I had this time. Very simply put. Like, these players were more focused on what I was telling them, right? And those players were more focused on just winning the round. Yeah. And people have to realize winning is a consequence. And as you said, the first part, 2-0, very good. The first round was followed, the second round not so much, right? The third round was followed midway. So what I taught them about reactions, right? How to react in situations, absolutely perfect. 2v5, they go back, A से B जाके plant करके, it came down to a 1v1 with how lovely they played. They converted a 2v5 into a 1v1, and even that 1v1 जीत जाते हम. हम थोड़े ज़्यादा ट्रिगर हैप्पी होके पीक करने निकल गए, ज़रूरत नहीं थी, because we heard the sound. उसके बाद 2-2 हुआ, that was also fine, right? 2-2 के बाद we just sort of switched off. And I took the timeout, and I told them as well, ki, listen, we're forgetting the game plan, we just play according to the game plan. But again, see, the thing is, these are new, they aren't accustomed to playing according to a play style. Like, however they've learned, or however they've been coached, like, right? They've not been accustomed to playing according to a structural play style. They had like fluid things and everything, but no struct, like, let's say how I tell you how I philosophically look at things. We are talking about RG versus OG. Yes. So how I look at things, very simply put, as in, I first define the playstyle, then we go on to the comps. Got it. Yeah.
अभी वो प्रॉब्लम है, समझ में आएगा गाइस, हमसे बात कर रहे हैं, स्क्रीन खोल नहीं है, लो भाई, अभी स्क्रीन खोल के फिर बोलोगे अरे स्क्रीन में तो कुछ चल ही नहीं रहा, ये देखो क्या चाहिए तुम, ये चल रहा है स्क्रीन पे, ये खोल के रखा हूं मैं। हाँ तो या यू वर टॉकिंग अबाउट द बाइंड। Yeah, so actually watched it entirely. Like, yeah, third. I was like, y'all won the first pistol, and I was like, pistol जीत के भी बाद भी 13-6, 13-8 score run कैसे हो सकता है? Like that was what I was surprised by. But then I saw, okay, they kind of crumbled towards the Yeah, end, which is sad, unfortunate. it would have been a very close game. 100%. So, which is why I'm saying, like, this time, this has been the best SCA, VCC so far. Phase 2 में you saw Valor and you saw Reckoning give everyone a tough fight. Yeah. VLT का match you already know कि क्या Hmm. होता, मतलब there was a big chance we could have won it 2-0, right? And Yeah. then OG wala match is the same thing. There was a very big chance we could have brought it close on the second map. I don't know if we would have won the second map. First map we won, second map it would have been close. Yeah. And again, so FPG is the only game I'm disappointed by because they wanted to revert to that T69 comp, you know. Mm-hmm. And I mean no disrespect by T69 comp. I named it T69 comp because T69 was the best team to play that comp. कौन सा Honestly. बैंक वाला किलजॉय वाला Split वाला. Split वाला जेट रेज ओमेन वाला, जेट रेज ओमेन, बेसिक अपने हाँ बेसिक, फ्लावर पे सामी डैश करता है हर बार, सैचल मार के एल्बो की तरफ आया जाता है, वो पूरा चीज वो बहुत अच्छे से करते थे यार। फुल स्क्रीन गॉड स्पीड कैम मोड करो, अबे भाई अलग ही तुम्हारे फेटिशेस चल रही हैं भाई। सो आई एंड देन इवन you guys struggled, right? on mind. In the group stage, like phase 2. Bro, yeah. Group stage we played horribly against Revenant. We should have 2-0 Enigma in that Oh भाई, game, but I guess not. भाई वो तो मत ही Both पूछो। both maps should have been 2-0. Like honestly, like even though we beat OG today 2-0, I'm not at all happy with the ascent. Like I Oh, just won't true. be happy with the ascent. Like 13-8 is still not a scoreline I want. The show like shows me that we can play this way as a squad. Like there are so many rounds even against the VLT series, if you notice, that shouldn't have been a 13-4 game. Even Breeze shouldn't have been a 13-4 game against VLT. It should have been 13-2, 13-3 Oh, even. definitely. And especially if you're talking about today's ascent, yeah, I can 100%. understand 100%. Never. Yeah, 100%. like we've always historically struggled against pistols, but going 3-0 down and the first buy round we lost was because Persia lines us up again for a murder event. Like that was just like no like Yeah, and then you guys stepped up by winning the pistols. Like after 3-0, you got yeah, winning you the won the thrifty thrifty, because and Rossi then went yeah, insane. And like once like Rossi got really lucky in that sense because he had chamber up the minute like after he got the first 2 kills. So that really frees up your defense right when he basically gets the also one thing I didn't understand in the round immediately after, right, when Rossi ऊपर डब्बे पे चढ़ा हुआ था बैरल पे, ठीक है, हाँ सच बताओ उनका ड्रोन उनको स्पॉट करता है उसको, ठीक है, हाँ why do they peek him then? I don't know. I'll tell you something. Yeah. I went to the gym while this game was going. I was working out when Oh, this game was going on. I'm not even kidding. talk about pressure. I was like, भाई मुझे घर पे ही नहीं रहना है मुझे देखना ही नहीं है गेम. I went to the gym and I was working out. So I was very confused by that sequence, right? Yeah. You can see a chamber in his natural habitat. इतना अच्छा elevated angle. Yeah. Then it's SK Rossi, right? Hmm. You've spotted him. Why are you peeking him? But yeah. But I mean, it's like I don't know. मेरे को याद भी नहीं है वो sequence to be honest. And then I Lightning Fast came online. Lightning Fast gave extremely good cover. A couple of rounds, let's say generator के पीछे वाला round from Lightning Fast. Market वाला round from Lightning Fast. Such good rounds on defense from Lightning Fast, man. मतलब. Okay, don't get me wrong. जो भी बोल रहे कि ये क्या कर रहे आदमी है क्या टाइप का एनालिस्ट है. I finished my prep at night. I woke up very late the next morning. I spoke to Bhavin and I explained to him everything that I wanted him to do, and he was like, "Okay, that sounds good." And then I was like, "Fuck it, let me go work out," and I went to the gym.
No, so I'll tell you something. And a analyst, a assistant coach doesn't have to be there during the match. I don't have to be there during the game. Yeah. The game, like honestly, as an analyst, the only downtime you get is during the game. Exactly. It's during the game is my only downtime. Like basically he can watch the match and he can just analyze usi samay to save time afterwards. Ki, And I even have the game unlisted recorded for me. So if I want to have a particular round from comms, I can have it. I can hear it after. very easily. Yeah. Yeah, so that helps a lot. So analyst assistant coach को वहाँ पे रहना जरूरी नहीं है. Coach को रहना जरूरी है if for some reason, let's say eraser के time का कुछ schedule रहता है ना कि रात Then है. he informs me. Yeah. Then Malav sits. Like Malav was there for VLT. No, I was there for Revenant. For VLT Revenant? Eraser was Okay. VLT Eraser. Okay, Revenant. Yeah, because I saw you in a custom Yeah. मेरे पे. And guys, the problem क्या होता है ना, मैं वॉच पार्टी इसलिए नहीं करना चाहता बिकॉज मेरे को तो लीक्स मिलते रहते हैं और मैं लीक्स वाला देखूंगा या वॉच पार्टी करूंगा. अभी देखो, मैं वॉच पार्टी करूंगा डिस्कॉर्ड पे तो मैं गेम के अंदर लीक से देख सकता हूँ कि जीत गए कि नहीं. बिकॉज तुमको नहीं समझ आता, प्रेशर मेरे को भी फील होता है. Even if I say I'm neutral and all that, obviously, as I told you before, if it's VLT playing, I obviously have some sort of bias towards VLT because I know them personally. After VLT, the next team is G. So I have a personal bias. मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को ये better team लगती है. It's just that I have personal connections there. और it's tough to not support them. Like even if you don't want to support them, ऐसा होता है ना कि अंदर से लगता है यार ये राउंड नहीं जाना चाहिए था. एंड वो अजीब सा फीलिंग आता है मन में. हाय फ्लिका. Like even the times like I wasn't working with G, I always have the like that. So there's always this, like even when like in the middle, like when I left, right? So when I came back after that, whenever we're talking about the team, like there's always I'm in two minds कि मैं बोलूँ us बोलूँ कि y'all बोलूँ भाविन को when I'm talking about what the team's done wrong in the past. क्योंकि like it's like home for me. So yeah. And see again, similar to what I said, Malav resonates with these. Malav has grown a personal connection to Global by working there. So even when he's not working with Global, obviously, कांग्रेस टू Malav बोल दे बजाज he too cool to reply to me. अरे सिंगल बोल रहा है भाई. अरे दिल्ली. Emotional connection we all have such. Yeah, so I don't call it emotional connection because emotions तो हर जगह ही रहते हैं यार. But personal connection है. I have known Malav for years. अभी जी का बात करें, सिंगल को I have known for years. ठीक है. Hell Ranger was my favorite IGL CS:GO में. Everybody knows that. Everybody who knows me knows that. Yeah. It's no secret. So मेरा personal bias obviously रहेगा ना. Did G comms come out of syllabus? I think so. Breeze comp was थोड़ा सा changed. But what do you think about this, Malav? About what? Us changing comps? Oh yeah. I thought it was logical, completely logical. Like the comp change with Reina bringing in Reina and Cypher made perfect sense for me. I told you that, right? Yeah. So the one thing, like if you watch our game against OG, it's just that like okay, so the idea to change the comp, like we wanted to change the comp, but the comp I had in my mind was a little different. I'll tell you guys the comp that I had in my mind also, like how different it was and what Bhavin's comp was, and I like Bhavin's comp more. And it was Bhavin's decision completely to change the comp. Like we decided to change this comp like the day before the game. Like before Bhavin went to sleep and I went to sleep, I asked him, Bhavin, I want to change the breeze comp. He was like, I'm changing it as well. I want to play this. And I was like, I want to play this. But then I said, yours makes more sense. So the comp I wanted to play was I wanted to play Jet and Chamber, Jet on Rossi and Golu on Chamber, which is what I wanted to play personally. But at the end, we decided it probably made more sense for us to play the Reina and the Cypher on Golu and Rossi respectively. But I think changing the comps, I don't know how big of a factor it honestly becomes inside the game, because like this game is entirely based on reactions, like how you react to the opponent and what they're doing. So if you have good reactions, no matter what the opponents are doing, you will still win. And also, I'd just like to say, yeah, Kamala, please continue. Yeah. And also that the old comp that you're playing with the Jet and the Reina, like when I reviewed that game against OG, I could straight up tell that okay, if we have a KO in this situation, we win the round. A lot of the rounds I felt that way. So changing to the KO and having a KO in just makes more sense. So my opinion is that not just KO. I told Malav, big change. Yeah, I told Malav that I think so gone are the days of Chamber.
Okay. I think so. I said this वो RIB वाला article में भी कि with the advent of dive metas जो हम बात कर रहे हैं ना, we call it dive metas, triple initiator meta, ये सब अभी देखो इसमें chamber चलेगा triple initiator में, right? Because you're substituting a duelist. You're not bringing in chamber as a sentinel, right? Yeah. So you're bringing in for his duelist properties. वैसे ही breeze में if you want to bring in chamber as a duelist चलता है, but you can't bring him in as a sentinel property anymore. Because with the dive meta, everybody has now learned कि diversity मतलब jet और उससे आगे बढ़ना है हमको. And with that, Cypher will become more and more prevalent. I believe in Cypher. I mean, I think the next map that should come into is Fracture. I think teams like us included हमारे में है. should move away from the chamber on. We've Fracture. already moved away. Yeah, like for teams who haven't, like, you know, obviously like not many teams get to like change the comps right now because of the tournament schedule they're working with. But I think the next map you will see the chamber move away is on. Yeah, hi Bubun. हाँ single chamber कौन? So me again, I'll explain क्या बोल रहे हैं हम मैं और मतलब. We are not saying कि chamber is gone. I'm saying chamber is gone if you want to play him as a sentinel. For his sentinel properties, chamber is absolutely gone now, right? Yeah. But for his duelist properties, chamber is still there, and especially let's say for a team that doesn't like to play for op, let's say. I think immediately your bias towards chamber reduces because chamber champions sort of the op setups एक तरीके से खासकर in this big maps है ना breeze और ये सब जैसे. Yeah. And I firmly believed, I told मतलब कि रेना से what happens is spacing की problem भी चली जाती है. What was happening very visibly was that they were able to isolate SK Rossi in executes and everything. Now they couldn't, and also I think Reina can still op. Yeah, Rossi was opting a little bit on her. Yeah, it's just that it's not his go-to anymore, right? Yeah. But again, Rossi on rifles still very good. Yeah, he's worked a lot on his rifling. You can see that. He's no longer. So basically, It is chamber trap is taking a only for person. him, not the team. I'll tell you something about the traps and alarm bots. I'll ask you, Malab, if you agree with me or not. I have stopped telling my team to use alarm bots or traps in a static manner. Okay. Oh yeah, that's I think so. Especially with if you look at the like, I'll give a domestic example only, or like not like I'll give a domestic example. Like how Revenant played Haven against us was basically they would just waste time trying to break the chamber trap if it wasn't B or Garage, which is the standard way teams play chamber. Yeah. So that is when we told Rossi that, hey Rossi, we don't need the traps in those spots. We wanted to completely change up the trap placement and even your own positioning, which I think we figured out a little too late coming into the half, and yeah. And if you look at the difference between how we played Haven this time is we no longer had like not only the chamber traps, we no longer had Rossi in a static position. Like he was constantly moving around the map. He was very aggressive, uber aggressive. Yeah, which is also a little bit of an anti-strat against them. So that worked out well against them. So I have started using it more in an active manner, right? Yeah. Like so I saw so many players doing this. I think one of the first, like not first, like someone I saw recently doing this is I saw even I think Durka also did it. Like Ascent Pay, he wasn't using a trap to watch flank, he was watching a trap to watch bracket push, like mid bracket push. I saw Ardis also do something similar on Ascent. And और कौन था? हाँ बस वो दोनों को ही देखा था. So I have always had this concept, Malav. Again, going back to the old RG days, right? I use the same logic with Killjoy alarm bot. So for me, Killjoy alarm bot, let's say the most important characteristic was not that you could sense opposition coming in, but vulnerability, right? Yeah, so if you can't make a play on alarm bot, then there's no point just keeping it there on B main जहाँ पे घुसते हैं जैसे Ascent में, तो फिर फायदा नहीं है. So what I used to do, I used to instruct Trist, who was the sentinel, कि we take let's say शुरुआत में जैसे होता है ना कि normally हम turret या aggressive है कुछ, तो turret कुछ नहीं लाके normal just contact पे we take B main आधा, right? Then you just put the alarm bot on fish, right? So what it can do, first of all, तुमको पहले info मिलेगी, right? Second of all, if let's say your Sova prefers Odin and your Sova has shock darts,
recons and everything, you can still make plays off of the vulnerability there, right? Yeah. And people will not expect it there, तो वहां पे तोड़ना मुश्किल होगा पहले 2-3 राउंड. उसके बाद एक बार देख जाएंगे तो फिर वहां पे एक्सपेक्ट करने लगेंगे, है ना? Yeah. बट जब तक नहीं देखते तब तक वी कैन डू इट. सो दैट वाज माय, अगेन इफ यू सॉ Rexy was doing the same thing on A mains. A main पे aggressive वाला आना, बट मैं वही करवाता था ट्रेस से A main और B main पे. Yeah. So I believe in that. You are on which team? I am on no team. Trist, right? हाँ भाई. Thank God G didn't against RNG, else VLT would have come all the way defeating RNG and easy to getting one slot to APAC. भाई अगर VLT जीतते तो VLT जीतती. हमको Yes, simply says they're in a cipher campus with no practice here. There's no practice, it was just less than yeah. Again, you have to understand the pedigree of the players, right? They have been playing together for the longest. This is the longest standing roster in Indian esports, Indian Valorant history. It right? might just be from the start of Valorant history. Like, रहेगा कोई team जिसने किया नहीं रहेगा, but I think we're a top contender for a team that hasn't made a change in a very long time. वही तो बोल रहा हूँ कि this is the longest standing roster. Not only in SA, but I think But like पूरा हाँ. पूरा worldwide, yeah. I mean वैसे SBE का बोल सकते हैं ना, SBE has been together पूरा टाइम से, because SBE तो CSGO के टाइम से साथ में. वही बोल रहा हूँ कि एक आध टीम रहेगी जिसने नहीं किया. पेपर एक्स ने किया था. नहीं, आई थिंक दिस इज द सेम नो पेपर एक्स ने किया था. पहले वाले पेपर एक्स का एक प्लेयर बैन हुआ था उस चीज के लिए, क्या नाम है, बूस्टिंग के लिए. शिबा they took out Shiba after they joined this thing anyways. या और फिर अकाउंट बूस्टिंग के लिए भी बैन हुआ था ना. पुराना उनका जो रोस्टर ही था ना पुराना है. हाँ. उसमें से लोगों को. यस. उसमें से एक बंदे का कंट्रोवर्सी हुआ था. क्या नाम था उसका? इसके लाइक इंडियन कोई प्लेयर के साथ ही कंट्रोवर्सी हुआ था उसका. एक तो ड्रीमी वैलोरेंट था, वो बैन हुआ, वो अलग है, वो 2 साल के लिए बैंड है अकाउंट बूस्टिंग के लिए. शीबा वाज रिप्लेस्ड. या शीबा एंड मूजी का कंट्रोवर्सी होता है ना कोई तो इंडियन. मूजी का तो चलता रहता है भाई. मूजी. गैस्पी सर एक्सप्लेन कर दो फ्रेंचाइज सिस्टम. हाँ आई विल. आई थिंक सो आई एक्सप्लेन्ड इट मल्टीपल टाइम्स आउट एंड ऑन. फ्रेंचाइज सिस्टम इज वेरी सिंपल यार. एवरी रीजन में 8 से 10 टीम रहेंगी. हमारा रीजन विल बी क्लब्ड अंडर एशिया में जेपी, केआर, एसईए, हमारा रीजन विच इज एसए और ओशियानिया सब रहेंगे. तो मैक्सिमम एक टीम को स्लॉट मिलेगा एसए से, मैक्सिमम मेरे हिसाब से. which is quite interesting as a system because SA, like we've only had third party events for the longest time. So if third party events पे ban नहीं है total, तो फिर third party events तो चलते ही रहेंगे ना. नहीं कोई ban नहीं है. In fact, Riot wants that. So for us as a region where we have 3 massive tiers and a 4th might be interested as well. Yeah, and those 3 massive tiers are coming up with massive IPs. Massive IPs, bro. Like this, I don't think this is Skyesports का final price pool. How much they actually wanted to put in the scene. No. अभी कितना है ये वाले का? $8,000. How much is $8,000? $10,000 is 70 lakhs, I think. Okay, $8,000 must be around 75 into 8,000, 6 lakh. I mean 60 lakhs. नहीं 8,000 ही है ना, I think. 8,000 मतलब into 75 किया ना मैंने, तो 60 lakhs हुआ ना. हाँ. तो 60 lakhs. उसी के आसपास का there are like 3 maybe tournaments coming. Yeah. अभी तो $15,000 है. 15,000 $28,500 है. लाल मैं फिर कुछ और पढ़ रहा हूँ. What the actual fuck? मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ. The winner 15. Also this is something I don't agree with. I think so. पूरे टॉप 10 को मिलना चाहिए था. टॉप 8 या टॉप 10 या टॉप 6 at least. Lol, I'm sorry guys, man. I'm very poor at reading things. अरे भाई चलेगा. क्या फर्क पड़ता है? Yeah, but I don't agree with the split also. 15 के बाद 7.5 is too harsh, and उसके बाद 3 and 3 is also harsh. Like look at Revenant, right? Like you're a squad who's fucking grinding your ass off. ₹0. आओ भाई सीट पे बैठ के गरम करके जाओ तुम. Yeah, you're going home with nothing, which is just fucking horrible to look at. Yeah, and full power gaming as well, and even Valor and Reckoning, you know. Yeah. I may sound dumb, but I'm kind of curious about what does a coach talk about during a track pause? Do they talk about mistakes, team commits? Okay, so I have a simple philosophy. मैं ये follow नहीं करता हूँ, but for any coaches who are new, या for any team that doesn't have coaches, right? I tell them this philosophy. It's the 20-20-20 philosophy.
पहला 20 seconds I just tell you just tell the players to reset. अगर किसी को स्टिफ, अगर कोई है स्टिफ है कुछ है, खड़ा हो जाओ, थोड़ा वॉक कर लो या आंख बंद करके रेस्ट ले लो, पानी पी लो, कुछ भी, रीसेट योर सेल्फ. द नेक्स्ट 20 seconds goes into analyzing, टेलिंग देम कि वॉट एवर आई हैव ऑब्जर्व्ड. ठीक है. एंड द लास्ट 20 seconds इज हाउ वील अडेप्ट टू वॉट एवर वी हैव ऑब्जर्व्ड, हाउ डू वी चेंज थिंग्स. बहुत सिंपल. और उस 20 seconds का भी लास्ट का 5 seconds यू कैन यूज इट to just summarize everything. So 20-20, 15-5 भी कर सकते हो, but like 20-20-20 is very standard. सही बात है. टेक बॉस बस गाली देने के लिए नहीं होता. नहीं, वो तो मैं देता हूँ सिर्फ. थोड़ी थोड़ी गाली दे सकता हूँ. हाँ, वो तो मैं देता हूँ. बहुत एक आध बार आई थिंक, बट वो किसी और का काम है, हमारा नहीं है. हाँ, हेल रेंजर. यस. हेल रेंजर ऑलवेज लुक्स, जब भी टैग पॉज ये सब होता है ना, हेल रेंजर ऑलवेज लुक्स लाइक हिज किड हैज गॉटन 60 or 70% in boards. It's like मेरे को देख के इतना सुकून मिलता है ना अंदर से. Why always Malav here? Razor, you can also come anytime, man. Razor, we are bitching about you. We are always talking about it now. Your expectation from G in APAC depends on where they land. If they land in planes, very bleak. If they land in groups, still bleak, but better. The thing is, I think ये season has been, ये draw has been very unfair. चलेगा. It's okay. If not for a great result, we take the experience. Exactly. So people just think about results, but again, मेरे जैसे इंसान, अब तुम बोलोगे क्लीशे, but results are always a consequence for someone like me. As long as you are improving, and I can see those signs of improvement from my team, I will always back my team and say, fuck whoever is telling us we lost, but we are learning. Yeah. Malav is Chatspeed's fiance, bro. Bro, Yeah. yesterday Razor on his Discord was like, Malav and I are getting married. Udhar Malav and Razor is getting married. Idhar Malav मेरा fiance. Idhar Malav is pitching to CA. हाँ. और Malav IRL किसी और को पसंद करता है. हाँ, वो तो हो गई. Unfortunate है. तुम कुछ भी बन जाओ, जी के कोच भी बन जाओ, पर कटता सबका है. बोलना ही यही है. काश उसको पता रहता व्हाट इज जी. They don't know I am in G. कोने में. Oh my god, I just got it. भाई क्या मस्त मीम है. They don't know I am in G. They don't know I have a photo with lightning fast on LAN. अरे लाइटनिंग फास्ट के ऊपर वो मीम बनेगा. लाइटनिंग फास्ट के पार्टी में वो कोने में लाइक दे डोंट नो आई मीन जी. Because lightning fast is like that. Like once he opens up, he's very good, but like Golo's loud as fuck on LAN also. Malav TFFF, be loyal, bro. Malav is loyal to every bitch of his, right? Wow. And I'm using bitch in a very little term. मैं खुद को भी बोल रहा हूँ. तो guys please कोई offend मत हो जाना. I'm very sorry. आजकल मेरे को छोटे छोटे चीजों पे हो जाता है, मेरे को टारगेट हो जाता हूँ मैं. तो मैं पहले से सावधान इंडिया, सतर्क इंडिया, जो भी बोलते हैं. नो बट दिस इज वेरी ट्रू. इस बार का अगर हम देखें, ग्रुप बी में पहला बात तो जो भी जीतेगा वो जा रहा है. ठीक है. उसमें ऑलरेडी है ही भाई जर्जे, ऑल्टर ईगो, राइट. और तीसरा टीम ब्लीड या आरआरक्यू आएगा. आई डिड द मैथ्स और ब्लीड या आरआरक्यू ही आएगा. ठीक है. ग्रुप ए वाले टीम्स नहीं आ सकते, whoever qualifies, right? Is it because the two country rule thing? Yeah. Okay. और ये हो गया. अब ग्रुप ए से जो प्लेन्स वाला बंदा है, अगर वो क्वालिफाई करेगा, सो द मोस्ट likely group they will land in is group C. What is group C? Paper X Osis Gaming Order. मेरे को बताओ, आदमी करे तो क्या? प्लेन्स खेल के, एक तो प्लेन्स खेल रहा है तो कोई प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिल रहा है ना भाई. एज एन इंडियन टीम आई डोंट थिंक आई वांट टू प्ले पेपर एक्स अगेन. Not just Paper X, dude. Osis Yes. so good. आज इंग्लिश एनालिस्ट बोला सेजेस आर फॉर ईगल्स. सही बोला होगा भाई, इंग्लिश एनालिस्ट है तो फिर सही बोल रहा होगा. What fundamentally do you think makes your team good according to you guys? Guys. भाई ये तो बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है.
तो ऐसे तो 6 घंटे का क्लास ही ले लो, मुफ्त में ये सब कुछ बता लो, मतलब पता कर लो। Yeah, but like the problem, like fundamentals is such an like कैसे समझाओ यार अभी, इसमें बहुत चीजें आती है। बहुत कुछ आता है भाई, फंडामेंटल्स में भी लेयर्स होते हैं। हाँ। लाइक सबसे बेसिक लेयर में अगर जाएंगे विच इज रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, हम्म। फिर उसके ऊपर चढ़ाएंगे तो एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है। हाँ। फिर उसके ऊपर आ गया तो कॉन्टैक्ट प्लेस आ गए, फिर उसके ऊपर आ गया तो डबल पीकिंग एंड पीकिंग का बेसिक्स आ गया, हम्म। फिर उसके ऊपर आ गया तो कॉल आउट्स आ गया, कम्युनिकेशन आ गया, बहुत कुछ है भाई। ट्रेडिंग, यूटिलिटी यूजेज, वही ना, पीकिंग, ट्रेडिंग, यूटिलिटी यूजेज फंडामेंटल्स में नहीं आते भाई like a better way to define, like you need to have a lot of protocols also as a team. Yup. You should have plans. But the problem with protocols is तुम जितने protocols बनाओगे you'll run into more situations जिसके लिए तुम्हें और protocols चाहिए रहेंगे. So protocols never ends. So because the thing is, Valorant is not an exhaustive game, just like all Yeah. other FPS games. They are not exhaustive games. चाइना के लिए स्लॉट का क्या हुआ अभी तो नहीं है भाई, मैं फोन करके पूछता हूँ, आ जाएगा तो बता दूंगा। Guy if G plays confident, they'll make top it. Very tough man. I say I am not someone who just licks people off. सीधा साफ बात है भाई, मैं पहले ही बोल दिया था हमारा कटने वाला है। सीधी साफ बात है, हमारा विशुद्ध तरीके से कटने वाला है, चाहे कोई भी टीम विनर में जाए प्लेन्स में जाए, दोनों तरीके से टॉप 8 के चांसेस आर वेरी ब्लीक। whoever goes, टॉप 8 का चांसेस आर वेरी ब्लीक, बट व्हाट यू विल गेन हियर, पहला बात सर्किट पॉइंट्स फॉर एलसीक्यू, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड ऑफ ऑल इज व्हाट मलफ सेड, एक्सपीरियंस भाई, मतलब हाउ मेनी टाइम, ओके वी ऑल स्क्रिम्ड अगेंस्ट पेपर एक्स, ये वो, हाउ मेनी टाइम्स do you get to play against these teams in a tournament setting where they will give it their all? कितना कुछ सीखने को मिलेगा भाई। Like even when you scrim other SCA region teams, which I'm not going to name, like we learn so much, like through scrim only. Like you learn so much more from other teams. Like you watch one Gambit, what you learn like 5 to 6 Yeah. different things. Malav, I dare you to bench Rossi and play Jet at APAC like CA did. अरे 1% भी है तो क्या हुआ, बी ऑप्टिमिस्टिक। जिलोसिटी ऑप्टिमिस्टिक तो हूं पर रियलिस्टिक भी हूं। आई डोंट वांट टू पुट इनसेन अमाउंट ऑफ प्रेशर, क्योंकि फिर जब ये लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे तब हम ही लोग गाली भरते। अरे CA right now. बेचारा। Yeah, like fuck it, like straight up. मेरे pickums भी same है. मेरे pickums भी same है literally the same. Even I have us making an unbeaten run in upper bracket. I literally do. अरे भाई वो सब छोड़, मतलब आई हैड टू ब्रेक डाउन वो क्या नाम है उसका, सांगवान शेयर्स का वीडियो जो सीए का उसने कट किया क्लिप, ठीक है। हाँ. पहले बात तो क्लिप उसने बहुत गलत जगह से कट की है, ठीक है। Right. मैं उस स्ट्रीम पे था, मेरा चैट भी दिख रहा उस स्ट्रीम पे, मैं उस स्ट्रीम पे था, मेरे को याद है उसने किस तरीके से बोला था। पर इवन इन दैट वीडियो आई शोड द पीपल दैट वर हियर कि ही इज सेइंग कि दिस इज वेयर एनिग्मा और तुम्हारा मैच जो सर था, That's the only place we can fall down. हाँ. is this place. I remember और watching. क्या बोलेगा आदमी कि भाई नहीं वेलोसिटी तो हारेगी, देखो गाइस। नहीं, हम लोग जाएंगे इधर, हम लोग हाँ. इनसे हारेंगे, फिर हम लोग आएंगे जी के सामने और उधर भी हारेंगे। like you guys, like every team wants to go to APAC. कोई टीम ऐसा नहीं आती कि नहीं यार मुझे APAC नहीं जा रहा। Even Revenant or Full Power, right? The two teams you would consider to be not the strongest teams coming into this tournament. Even if Skargot did his pickings, I would tell him you're stupid if you don't think you guys are going to SG. अरे वो सब छोड़ो भाई, मैं रोया था। Like I was on your stream only, na? I said GE 100-0 to beat हाँ. God. Like fuck it, हम लोग जीते कि ना जीते, मेरे को मेरे प्लेयर्स में इतना ट्रस्ट है कि हम लोग हरा देंगे उनको। वही, एंड भाई सीधी सा बात है, मैं सिंपल सी बताता हूँ, रेकनिंग नहीं पहुंची फेज 3, ठीक है। Yeah. रेकनिंग को मैंने सिर्फ 10 दिन कोच किया था उस समय, 8 दिन, ठीक है। Yeah. बट मेरा उनके तरफ मेरा स्टेटमेंट क्लियर था, वी आर नॉट लुकिंग to beat VLT, we are not looking to beat OG, we are not looking to beat FPG, we are not looking to qualify for phase 3, we are looking to qualify for APAC. Yeah, no one comes with the like everyone wants to play APAC. कोई ऐसा आगे पीछे खेलने नहीं आएगा। तुम लोग अगर ये लोग कैम्स देखते हैं ना, तो मेरा कोच कैम अगर दिखाया होगा VLT के साथ हम जो पहली मैप जीते थे, आई वाज डूइंग काम, कोई बात नहीं, अभी सेकंड मैप है, कोई सेलिब्रेशन नहीं चाहिए मेरे को। We were that dialed in. The VLT वाला मैच में we were that dialed in, and that is why so many people are feeling bad ना अभी तक कि वो
अगर वो इलेक्ट्रिसिटी वाला नहीं होता मे बी वी कुड हैव वॉन, और उसकी वजह से बाकी गेम्स कितने और स्मूथर जा सकते थे हमारे. True, that's true. You can completely change things. वही तो, बट आई नो वी वर दैट डायल्ड इन, मतलब वी नेवर हैड द थॉट कि वी आर गोइंग टू बीट वीएलटी या आवर एम इज टू बीट ओजी या कुछ. आवर Yeah. एम वाज ऑलवेज टू क्वालिफाई फॉर एपैक, और हमने प्रिपरेशन उसी हिसाब से की थी 8 दिन में. इफ यू सी द अमाउंट दैट दे इंप्रूव्ड, इट्स बिकॉज देयर एम वाज एपैक. अगर उनका एम ओजी को हराने का होता तो वो लोग 1-2 राउंड जीत के छोड़ देते. True. इट्स बिकॉज वी एम दैट हाई दैट वी रीच्ड दैट हाई, कि भाई अगर हमने 100 अटेम्प्ट किया तो हमको 60 मिले, और वो 60 मिले. यू गाइस आर प्रेजिंग द 60, बट दैट इज ओनली बिकॉज दे एम्ड एट 100. इफ दे एम्ड एट फकिंग 60, उनको 36 मिलते हैं, यू गाइस से अरे ये तो होना ही था. Fair enough. Similarly for G, VLT, any team here, even FPG का कोई बंदा आगे नहीं बोलता भाई हम तो बस देखना चाहते थे कि हम कैसा खेल सकते हैं. ऐसा हो ही नहीं सकता भाई. मैं बोल रहा हूँ ना, मैं 8 दिन अगर कोच करके रो सकता हूँ क्वालिफाई नहीं होने पे फेज 3 पे. इमेजिन व्हाट VLT players and coaches and owners and all staff must be facing. टेस्ट का ट्वीट देखो, मैंने देखा है यार, पीपल हेट फैलाते हैं, क्या ही कर सकते हैं भाई. तुम देखो हम ही चूतिए हैं भाई. Yeah. And also this is one quote that you guys should live through, like essay में कुछ जो भी है वो याद रखना चाहिए उनको कि they love you one week, they hate you the other. Just make sure you get paid both weeks. Yeah, So just exactly. make sure you're getting paid. And I got paid even if I was working. Even if you were fucking, like, I am pretty sure during our APAC run, people thought I was the fucking worst analyst ever, or the fucking worst coach ever. And right now, people think CA is the worst coach ever or the worst analyst ever. True. Like, the guts you need to have. Like, I was talking to someone about this actually today. 4 players on VLT are playing completely new agents. So the only person who's on an old agent is Amit Rasu. Yeah. Like, everyone else is playing a new agent. And even he has added pressure because he's handling the 4 players that are playing new agents. Correct, yeah. And like, think about what needs to go through his head to be able to maximize the agents. Oh. True, man. I mean, see, जैसे Malav ने बोला, when Malav was chastised by the community, he was chastised, है ना? And then right now it's the same with CA. Yeah, but it's just part of. मेरे को तो लोग ऐसे ही डैमेज देके जाते थे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था. मैं तो उस समय एक्टिव भी नहीं था, मेरे को कोई जानता भी नहीं था जब आरजी को मैं कोच करता था, टू द पॉइंट वेयर मेरा नाम भी नहीं लिखा जाता था कहीं पे. लाइक अप अंटिल नवंबर people didn't even know, half of the people didn't even know I was coaching RG. Which is what was With you, yes. Yeah. But like मेरे को I have grown to learn to not give any fucks. Okay. No member of the community or no one can tell me I'm bad. I know who I am. I know my ability. I know my strengths. I know my weaknesses. And I know I have to work on those weaknesses. And I know I have to work on my strengths to make it even stronger. I know about me, and even so, I'm learning about. I continue to learn about myself every single day. Yeah. But what I do not allow now is to let my body or my mind feel bad about a comment that I see, because True. I don't fucking care. I don't give 2 fucks about what you say to me. Yeah. Which is why I never ban people who hate on me in my chat. Yeah, which is something that like when I started blocking people on Twitter Yeah. actively because I didn't like the content they were putting out, you guys were like, especially you were like, हाँ भाई मैं तो देख के ही छोड़ देता हूँ, which is like something I need to learn a lot, like to deal with negativity on the timeline, which is something I haven't grown to accept. A lot better now, but yeah. Yeah, but see, that's the thing. I think we'll all learn to grow. You're young, Manav. मैं Yeah. तो बुड्ढा हूँ. मैं तो बुड्ढा हूँ भाई. But you guys are young. You guys will learn to understand this. But it's very important. Learn not to give 2 fucks about. Always check the comment. Make sure, because sometimes कहीं ना कहीं पे constructive criticism छुपा रहता है ना? Huh. It's always good to listen to comments.
I don't have a problem with constructive criticism. Yeah. Like, but there's a very thin line between constructive criticism and hate, which people blur very often. Yeah, not even constructive. I mean, I think there is a line between constructive criticism and criticism. Then there is a line between criticism and hate. Yeah. Sometimes even criticism is okay, yaar. I know I fucked up. I deserve like Yeah. to be shit on. That doesn't mean you convert it into hate. अरे ये तो कभी कुछ नहीं कर सकता था. मतलब this is going a bit too far. Like especially, I think what happened with the Chet one. I think that is the best example. Chet fucked up by saying what he did, right? Hmm. But I saw people saying, oh, he was never a good coach even in CSGO. That is where I lost it because how can you say that? First of all, you know zero about CSGO. तुमको घंटा नहीं पता CSGO के बारे में. दूसरी बात, how do you evaluate if he was a good coach if you don't know about CSGO? You go to his achievements, right? I mean, Yeah. Kai has every achievement there is. Kai took NRG to heights where NRG never expected themselves to be. That was just such a great roster, no? The Yeah. Fugly, Breeze, Oh. Ethan, fifth contest. Can I? Okay, I think I can show you my. Fugly, Breeze, Ethan. Can I Tarek the roster went towards the end? Yeah. Where is my Yeah. resume? CV. Okay, I think I have an article उसके बारे में. अरे भाई बहुत बहुत गजब आर्टिकल, मतलब आर्टिकल नहीं, बहुत गजब टीम थी वो एनर्जी. See, I have written for websites you don't even fucking know exists. I remember Attack. Yeah, this is esportbettingtips.com, guys. I didn't even know they exist till now. भाई ये सब कितना पुराना है? ये सब न्यूयॉर्क सेमीफाइनल प्रीव्यू टू 2018 का लास्ट है क्या? Yeah. इधर सिर्फ 10 आर्टिकल लिखे थे मैंने, पैसा कमाया और फिर छोड़ दिया. वाह. Oh, by Envious, that's the name I haven't heard in long time. अरे भाई ये आर्टिकल फटा था भाई. दिस आर्टिकल नाउ टेम कोमो वाला, ये आर्टिकल पूरा भाई रेडिट, ब्राजीलियन रेडिट पूरा खत्म था. Of course, I mean, बात किसके बारे में की है? भाई बिकॉज भाई देखो एक चीज आई विल प्राइड माई सेल्फ ऑन, आई थिंक आई हैड गुड स्टोरी टेलिंग. मैं लॉन्ग फॉर्म लिखता था. नाउ टेम कोमो मैंने पता है पूरा ये एनटीसी को ही लेके बनाया, नॉट दैट क्रिस्प, ठीक है. देन नाउ टेम कोमो नीड टू चेंज, ठीक है, हुज टू ब्लेम, ये वो, आउट विद द बोल्ड इन विद द बेटर, ठीक है. बोल्ड एज इन यू नो कि भाई केएनजी और वो सब है ना. And then Brazil fans may be infamous for their comments or expression of feelings on. इसको भी मैंने जानबूझ के बड़ा किया था. But they are amongst the most passionate. Yeah, this is like the very similar, like India. very similar. Like the reason I specifically say VLT is because I can't imagine what VLT must be going through. Like, True. fuck it, like imagine Anna, like the amount of money he puts into the scene, amount what he's trying to build, like in terms of infrastructure, in terms of boot camps, and then imagine things like you lose one tournament where, okay, the one thing I will appreciate about the Valorant squad is they are the most far ahead in the meta than anyone else. True. And it takes guts to try Neon, takes guts to try Fade and stuff like that. Like playing these revolutionary FPX type comps, not exactly FPX type comps, but comps you would see coming out of FPX. True. Is not अपना वाला FPX, please. Bye. FPX मत समझना. Which is I have started saying अपना वाला को FPG now, मतलब ताकि. Yeah, I think have they changed it to FPG or is होना तो चाहिए भाई. Yeah. X क्यों था? मेरे को लगा exploit है इसलिए X होगा, मतलब. Bro, you can call me kid, but I still think releasing. अरे I will not call you kid. It's a fair statement. Yeah. तुम यहाँ तक बोलोगे विवेक, it's a fair statement. It's criticism of a decision. इसके बाद I still think वो उसके बाद जब चालू होता है ना MW1 can't play duelist, that is hate. Because MW1 is one of the best duelists in the region. Okay. Yeah. Maybe you can say he's not in a comfortable role, but and also he's just come back from break. Yeah, he's taken a 7 month long gap for the game.
Wait, which player was it? Marthulu said this when he just swapped, like when he played a tournament game after just having played ranked. Is like, okay, what the fuck? There's a world of a difference between the game I've played and stuff like that. So, but yeah, सही है हुजैफा भाई खुद ही को शाउट आउट दे दो डू यू थिंक नियॉन ऑन ब्रीज इज गुड यस वेरी मच सो भाई यू गाइस हैवंट सीन माय कॉम्प ऑन ब्रीज he's याद है ना जेट ब्रीज Neon, Eraser, you're still here. Bhai, if you can tag him, then he's still here. This is common sense, guys. अरे नहीं बैठो खाली अलग टाइम में रहता है अगर छोड़ दिया तो भी like you know sometimes is there like वो भी सही Oh. होता है But why would you ask him if he's still here? मतलब क्या चाहिए तुमको इधर से अभी? And भाई. तो अभी कल के बारे में बात करें Yes, finally. Okay, first of all, what is the veto process? Is it the one followed in Souvenir? should be Or ना ban no, because TEC के TEC नहीं Sky Sports का वो वाला जो हुआ था ना कौन सा हाँ। वाला बताओ तो उसमें वो वाला मेथड फॉलो हुआ था वीटो वाला कौन सा लाउड वाला इस बार जो अच्छा, मास्टर्स perma फाइनल हुआ था ban ना परमा बैन मिलता है जहाँ पे दे गेट बोथ बैंस एंड ऑप्टिक गेट्स टू नहीं चूज द नहीं फर्स्ट I don't think it's that way नहीं all 20 teams confirmed yes Sushant by the way how are you enjoyed the spectacle and you're ready are you ready for tomorrow BO5 are you ready for the final showdown फाइनली कुछ लीक्स दे दो मतलब भाई क्या लीक्स चाहिए तुमको चाहिए भाई हाँ मैं पूछ देता हूँ you don't have to answer you can just plead the fifth amendment so veto wise I think it's going to be Kohli decided. first of all Kohli what about Kohli now the people were asking okay, now that you qualified right now that Global is qualified yeah what about Kohli okay so Kohli's gotten his visas I think Rushi said for SG so as a squad we have visas for every player I still don't know what is Golu's schedule since I haven't spoken to him about his exam schedule and I'm not sure if we're actually going to Singapore to play it all depends on tomorrow's oh yeah that's very much true guys so first of Result. all I'll tell you if Global loses tomorrow that means they'll have to play planes and planes start from 9th of June there's no way I cannot see a repeat of what happened last time so do Global I hope so they will never travel with such less time right hello sorry I was talking at him that's why I deafened for a second oh can you repeat what you said I'm saying that what Malav is trying to say is that tomorrow if Global loses yeah they go to planes and planes start from 9th of June and nobody wants a repeat of what happened last Yeah, time with so logistics. yeah this is what Rushi said yeah Rushi said this because like he's management so he'll obviously have a better idea of what goes on like my conversations I haven't spoken to the team Oh भाई ये रहा इसके वजह से जीत रहे हो तुम आदित्य बोल रहा है गॉडस्पीड whenever I got GE to win I don't watch their match because I jinx them मत देखना कल का मैच नहीं तो आदित्य कैसे हो तुम आजा मेरे घर तेरे पे को डोमिनोज का पिज्जा खिलाएगा मतलब अगर कल जीते जी और तूने मैच नहीं देखा तेरे को डोमिनोज का पिज्जा खिलाएगा मतलब yeah if souvenir results remain same then first G second EG and as last souvenir result VLT got fourth surprisingly which also got same as current क्या बात है बताओ almost like these are the best teams here wait VLT VLT was fourth yeah they were last right did they lose to Exploit yeah तो मुझे याद भी नहीं है अभी I don't know मेरे को भी याद नहीं है यार अब तो मैं भी डाउट में आ गया रिजल्ट्स में मुझे भी नहीं याद थैंक यू सुशांत Sushant I know you're high with all the traveling and मतलब नहीं पीने के लिए नहीं guys come on but with all the traveling and everything हाँ velocity हारी थी भाई और इसमें हारी थी चैंपियन सीरीज में उसमें नहीं उसमें they won no उसमें भी they lost team snakes oh damn what the fuck Gosh. there was 0-3 yes there was 0-3 बाप रे बाप भाई देखा मैं सही था भूल भी गया था so yeah so question what about Kohli let's say if you don't travel and what is the likelihood of him playing right now odds I think it all depends honestly on Kolu's exam schedule which I have zero idea about otherwise and if he's
if his exam schedule is the position where he thinks he won't be able to study to his fullest level and won't be able to play, Yeah. he will play with Kohli. Okay. And what about Kohli? As in, how has he been practicing, and or what? Can we get some insight into perhaps he's been undergoing sessions under you or Eraser? Yeah. All this stuff. So honestly, we've played a few scrims with him as well, which more or less just come in when players were unavailable, and we've tried to put him in roles in a lot of cases to replace Kohli. Obviously, with Kohli, he has a lot of experience in KO and a lot of flex agents, so we might. I am a little bit inclined towards swapping around some roles and building some interesting agent comps, which teams won't expect us to play. RJ So Sharma yeah. says, "Can you take Deathmaker for APAC Challengers?" मैं तो ले लूँ, मेरी टीम है ही नहीं भाई, qualify नहीं. I'm actually not sure what the process of loaning players and how it works. The thing is because once Ace said on the stream that if they would have won for LCQ, they would have actually Vaklia wasn't going to be there, so they would have asked Rossi. So I don't know exactly what's the loaning process and how it works, but I think that is based on that. Sorry मलब, but no गोलू no party. तो मलब क्या करे बेचारे भाई, उसके एग्जाम्स है भाई. But it's also no Rossi, no party, no skills, no party, no kappa, no party. Exactly. You saw how instrumental skills was, और फिर कप्पा तो भाई. We won that clutch on Ascent where we more or less sealed the map. The rest Yeah. would have gone snowballed out of our कप्पा वाला hands. वो मिड वाला राउंड होना ही नहीं चाहिए था. It's amazing what Kappa has done this event. Clutches after clutches, seamless holds. He's rolling back the time, man. And I'm so happy because he can finally shut everyone's fucking mouth Yeah. about how he should be replaced and he's the weakling. There's no such thing as a weakling, dude. It's all about roles and freedom and confidence. Even someone who you feel is the weakest guy can outperform everyone else if he's given the freedom and confidence. And Kappa is already not a weakling. Like, I would say even Malav, if he steps in, right, would be able to play well if he's given the freedom and confidence and if he acclimatizes himself with the conditions, maybe in 2-3 months' time. Because remember, Malav will be playing with 9 players who are so far up his level, he'll have to increase his level slowly, gradually, right? Yeah. So within a month, he'll reach there, man. Yeah. If Deathmaker comes in G, would easily become top 8, DM on Chamber, Rossi. Bhai, this is wishful thinking, RJ Sharma. हम यही बोले थे M21 के बारे में. If M21, okay, you guys blame VLT for removing Vibhor. You guys were the ones who wanted DM and MW1 together. कैसे होता और कैसे होता? Oh yeah, people were like, "Oh, bring back MW1. He's insane. He's the best." Like I'm not trying to mock anyone, but this is what the fans wanted. And the thing is, it's obviously, I also agree, this is a brilliant lineup mechanically. But what you don't understand is, you guys wanted this, they gave you this, they also understood that, yeah, for natural progression into the next phase, like, they're not satisfied by just winning, right? This change is to make them stronger for APAC when they qualify for APAC. So, फिर नहीं सेट्स भाई, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम उधर कुछ भी दिखा दो, मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ है, ठीक है? तो वही है. तो प्रॉब्लम ये है ना कि this is a good move from my perspective because I think so it unlocks Vibhor and gives him a new team. Even if he didn't go to OG, he had every choice in his hand, man. He could have gone anywhere. And Like so many organizations were. yeah, Everyone knows how many orgs wanted him. exactly. The Holy Trinity. The big three all wanted him. Yeah. The thing is, you have to understand, guys, that sometimes it's good for both parties to part ways, right? मेरे को क्यों बदनाम कर रहा है, मैं जी सपोर्ट कर रहा है. अरे नहीं बदनाम कर रहा आरजे. आस्क मतलब इस बार लेमनेड का बिल कितना अमाउंट टच करेगा? भाई जितना चाहिए उनको, तुमको जितना लेमनेड चाहिए तुम लो, मुझे नहीं फर्क पड़ता है, खाली मारो अंदर जाके. आई गेस एंड ऑफ सीजन आज तो कुछ नहीं करेगा भाई. इस बार बोल रहा है, मेरे को लगा आज बोल रहा है. भाई कल जीतेंगे तब हो सकता है करे. जर्जियो ऑटो कॉन्ट्रैक्ट, हाँ यू ऑलरेडी सीन इन द न्यूज. रॉसी एस विवो डेडली डू एंड ट्रेंड. क्या बोलूं इसमें. चलिए
Gaspi sir, अभी FGC review होता है. Did you see this thing? So the G like Karthik. Did you see what he asked before? No. He asked before last line VLT, A line OG, next line G. Hmm, हो तो सकता है. Like, as the joke question, and he was like, okay. Zergia will win APAC, maybe not. मैं टीम सीक्रेट का एक स्लॉट दे के रख रहा हूँ. जैसे मैंने EG का बोला था वैसे टीम सीक्रेट को एक स्लॉट दे के रख रहा हूँ. EG वर्सेस GE मैप. यस, अब उसी पे आते हैं गाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली मेरे को आलो प्लान करना पड़ेगा. ये रहा, मतलब my first ever article for them was this. ECS season 5 finals, NRG second हो रहा. Oh. भाई ये कितने अकाउंट बना के आते हैं ये लोग? ओ भाई, अब फिर आ गए. चलो. अरे आई एम जस्ट सेइंग वन थिंग, बट आपने गलत ट्विटर देख लिया. वो मेरा नहीं है, तो तेरा ट्विटर लिंक मेरे डिस्कॉर्ड पे जनरल पे डाल दे. ठीक है, मैं देख लेता हूँ. चलो. एक्सपेक्टिंग PRX टू डिफीट ऑप्टिक्स दिस टाइम. ऑप्टिक अच्छा, मे बी ऑप्टिक एज आई सेड. अच्छा, आई डोंट नो इफ आई टॉक टू यू और समवन, मतलब आई Last टोल्ड देम. night? नो, नॉट लास्ट नाइट. कि अबाउट ऑप्टिक, कि आई डोंट थिंक ऑप्टिक वाज अनडिफीटेड. देखा, EG बीट देम यस्टरडे. Yeah, let's sorry, last night इसलिए बोला मैंने भाई मैं कल रात क्या schedule था मेरा. I think I was very tired या at 12ish when your stream started. I was like, fuck it, I'll go sleep. I woke up at like 3 or 4. I was like, fuck it, I'll do some work. या I finished my work at 7. I slept at 7. I woke up at 2 p.m. वाह. And then my mom was like, what are you doing? Like, look at the time. So I was like, sorry. Then I woke up. Then I had lunch. Then I finished one more map of reviewing, I think, and then like whatever the rest of the day. तो वीटो भाई, वीटो कर लेते हैं गॉडस्पीड अभी प्लीज. ये रहा. रुको, आपका अभी भी हो रहा है आपकी स्क्रीन पे. चलो, पहले Means वीटो पे चालू करते हैं. pretty obvious. Take out the two maps. नहीं, बस टेल इट फॉर द ऑडियंस. Icebox breeze और क्या? अच्छा, ये वाला तो काम नहीं करेगा. एपिक पेन. Epic pen. Icebox gone, breeze gone. This will be the most fun you've had, guys. This BO5 will be the most fun you've had. VLT chances, अब कहाँ से chances po? नहीं. Player who's lethal merger, decent torque, decent team. Chat speed fans are here. ये क्या बात है? Hades was saying Paradox is going to join Orangutan in future. User Will joined your OG channel. get more firepower by adding him? Obviously. Yo, hello Razor. Hello, Razor. Hello. What's up, man? Congratulations. Or should I say that tomorrow after you win? Like maybe Malaf will win tomorrow tournaments, bro. What about you? You're not winning? We're going trip, bro. Like Oh. long trip. Bye bye, Malaf. With Soju? No, not social, bro. Wine. Okay. Oh my god. Yeah, but Soju is damn good. Man. Our practice is literally like soju, like sake, like that word we use like 5 times per day. Oh, dude, sake. Yeah, Right. bro. Always. The thing is, we don't have that here, and the ones that we have here are pathetic. Like, So you guys are talking about tactic, right? No, like veto. we are doing map veto eraser Mavito with who? Or for Enigma versus. tomorrow. Enigma versus GE, right? Malaf? Yeah. Yeah. Why you do that in here, bro? No, we don't do it. We're just discussing Yeah. what can happen. So eraser, tell me something. I was going to ask this to Malav as well. You saw the map veto during Masters 1 finals, right? The BO5 one. Yeah. So do you prefer that, or do you prefer the standard one? Which one you mean? Okay, Like, so GP? Masters 1 champions, the team that came from the upper brackets, right? They Yeah, could ban 2 maps straight away. Yeah.
But the normal veto is different, right? The normal veto is ban, ban, and then pick, right? Yeah, yeah. So which one do you prefer? I'm not prefer anything, Godspeed. Malaf, sure, right? Like, it's fact, right, Malaf? Yeah. But Yeah. like, I think the two bans one is a little too advantageous for the team coming from the upper bracket, especially with a bracket like the one we had. Since not all teams have played the same number of upper bracket games, it doesn't make sense, in my opinion. Yeah, because with two bans straight away, you ban your auto ban and And you ban the the strong. opponent's strongest man. Life is also versus. Damn, RJ. So yeah, I mean, very simple. Icebergs breeze. फिर क्या? Who? I think so. EG upper bracket से so they choose first और क्या toss होगा फिर भी? Look, last time क्या होता, I think even if they pick first, like I think Oh, Malaf, we have to Yeah. playing 5 maps tomorrow, right? yeah, it's Yeah. BF5. Okay. So, okay. It starts early though. It's like Uh, timing is good. You know, like this schedule is so hard for me because I always sleep at 5 a.m. in KST, and like it feels like I have a lot of headache now, bro. Oh man, yeah, we can feel for you, especially the first few days when matches went up till 6 a.m. KR time. Like, Yeah. oh my god. But you know, You like know, the bigger problem with the format, which I think mm, I don't care about the late night. Like us playing second every day, like teams get so much more time to prep against us. Like six, yeah. 7 hours True. of prep time with ease. Like But why was yeah. it so? Like, why was Global always playing second? Like, I don't know fully. I don't know. Like I haven't asked, but So like Malaf, it's really good things for us because we can adapting for like time. But the thing is like when we are playing the game in late night, right? yeah, Our focus and our concentrating power is going down. yeah. Yeah, but it's also like enemies were like opponents team, so it's really same. But I mean Hmm. like the tournament's quality is going down maybe. Hmm. yeah, You true. could say so. But I always get some note and like write memorizing all of the things what Godspeed say that day, bro. After the tournaments, bro. Right? Yeah. That's why we're win the land, bro. Oh man. We're not win the land, guys. I'm sorry. Yeah, so like I mean like that's why we are going to grand final now. Yeah. No, but I mean, you're correct. That's why you're going to win the land, right? Oh, sorry, bro. Sorry, bro. Oh, so Why are you saying sorry, man? I'm uh, Eraser, when are you streaming next? People are asking. asking what? When are you streaming next? Mm-hmm. When Yeah, are you going to stream? When I'm stream, bro. yeah, Yeah. Today I just went to stream, but the thing is like we have to like prepare for tomorrow tournaments, right? yeah. So like I'm not sure why Malaf is coming here and then talk about the like Vito, bro. I'll prep later. Because Every day. you know like he already ready for the tournaments, bro. Yeah, that's Yeah. No, why no. he's just here. I spoke Eh. to Bhavin. Bhavin wants me to watch certain things, so I'll watch them after. No, because Malaf, people love your Yeah. streams, Eraser. Yeah, it is uh, wholesome. my stream is so horrible, bro. Like when I'm playing rank, you know, like my aim is so jiggling and like yeah, whipping. I'm whipping God, bro. I mean, then welcome to our region. Oh. Yeah. Like sometimes I can like feedback or like explain the things what they're supposed to in the tournaments, Yeah, but I'm not doing it a lot because I have to playing game and streaming, bro. I have to know the like in-game things for our exactly. Yeah. players. Yeah. It's really important things. That's why like Malaf is Dilsa Radiant, bro, right? Like I love you, bro. Yeah. Ah, Dude, but your streams are mad fun. Even though you're playing, like, hmm. your No, streams are no, very your fun. streaming is really good, bro. Like I have to always I'm getting note and like yeah.
That's a very old joke now. Mm, Malaf is really good, coach. Sure. Yeah, true. Yeah. I'm Yeah. noob, coach. Hell Ranger. Yeah. So second map, before the second map, I spoke to the team and I was like, so we were discussing something, and I said, and then Hell Ranger says, I don't remember what you told me before the game. I'm like, bhai, why are you getting me to do prep then? And he's like, I only remember the things I want to listen to from you. So I was like, ठीक है, at least you're winning. और क्या फर्क पड़ता है? Her Ranger is so toxic, bro. Yeah, right? very toxic. Yeah. He's so toxic, bro. Like he don't need any coach now. Like he's the king of our teams, bro. Like I think he's head coach and we're just like player, bro. Like he always teaching us. Ah. I think it must be what 3:30, 4 o'clock there. It's 4 a.m. 4 a.m. Damn. Yeah, so like 3:30 like 3:30 hours different. Yeah. Yeah. Man, all the best, Razor. All the best, Malaf. Well, Razor, you should sleep 4 a.m., 5 Yeah, a.m. man, it's Yeah. 4 a.m. Yeah, go sleep. Don't have coffee. And tomorrow, Go then you have to sleep. celebrate as well, right? Yeah, late night tomorrow Yeah. also. Malaf, you know, like I always getting 2 liters of coffee per day, bro. So like after that, I feels really like after that, bro. Like always halt attack from our teams, and maybe I'm going to die because they always doing some like 13 versus 11 in all of the game. So that's why I told you that like they are just supposed to kill me in previous Yeah. day, and today like they just forgive because I'm not dying, right? Yeah. Yeah, that's the point, bro. Like they just supposing to kill me and you, bro. Yeah. Maybe the operation is from Gavin, bro, because he's king. Bhavin. Yeah. Okay. Like Godspeed, I Yeah. have to go now. Okay. Good night, Razor. Good night. All the best, man. night, See you guys. after the tournament. Yeah, see you after the tournaments, bro. Okay, guys. Bye bye. 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 User Such a good disconnected guy, from man. your channel. Such a बहुत also मैं practice such में a such a funny guy, such a good guy. Yeah. And you could see that he was tired. मतलब Yeah. delirious tired. जैसे मैं नहीं रहता. हाँ. मलक को पता. People know delirious me. This is delirious Razor. When you are high on tiredness. True. भाई मेरे साथ भी ऐसा है, तो मतलब को पता है, ये को भी पता है, तो मैं टायर्ड होता हूँ तो मैं अलग ही नशे में होता हूँ. So मतलब Godspeed just found a new crush, dude. I love all of these people. Okay. गोलू is the new hick of IGC. What do you think? So many UC भाई गोलू ult मारने के लिए नहीं, ऐसे ही ऐसा बोर होता है और दीवार पे पेंटिंग करने का रहता है ना तो डाल देता है वो. आई थिंक सुनो, चीजों का होना उसके आतंक से ज्यादा बड़ा नहीं होता. वाह. But yeah, he finds some insane space when you with his raise. Like even though like you'll say that he's not like on raise he wasn't fragging out as hard, but his space creation has always been insane. Like he's just fuck it, he'll throw himself in. He'll like गोलू के आतंक से मतलब नाइट राइडर शॉट मिस कर गया, उन्होंने अल्ट वाइट सब मिस कर दिया. इसको रोको, ये अल्ट नहीं. और उनको क्या पता था कि अल्ट यूज करके भी कोई नहीं मारेगा. उनको अगर ये पहले पता होता, वो लोग सोचो क्या सोच रहे होंगे. अरे ये अल्ट करके, अरे ये हम लोग दो साइड में मार देगा, अरे वेट कर, अरे नाइट शॉट मिस कर, सोन कोई बात नहीं मैं अल्ट कर रहा हूँ. और सब कुछ करके उसका रेस का अल्ट जमीन पे जहाँ पे गिरा वहां पे कोई नहीं. Even today, like he's found some insane entries. Yeah, why? Entry. I fucking love. I told you this is देसी. I think so. मैंने पहला लाइटिंग फास्ट का रेस के बाद बोल दिया था. ये देसी रेस भाई मस्त है भाई. घुसता है अंदर full. Like, he has the confidence. ये देसी रेस मैंने बहुत कम देखा है इंडिया में.
Yeah. प्योर देसी रेस भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता. Damn, I have a word for you loving everyone, can't say it here, I'll get cancelled. तेरे को तो कैंसिल करके रहेंगे भाई. Even the first time he played race and G lost, he created some. अरे that is what. Malab knows. I've been a propagator forever for Golu being liberal, Yeah. receiving liberty, and it feels so good because G as a team have so much to unearth. Like even though they've been together for so many years, right, Malab? But Yeah. I feel like there's so much to unlock in G still, and Yeah. they're doing it the right way. They're doing it step by step and not all at once. Yeah. Because all at once is what VLT did. If they did it step by step, they would have the same amount of Potentially success. better results. Yeah. Yeah. So But sometimes, do you think like going all in might just be the way? Because like this way, VLT get like if you look at VLT's approach, right? Like with the amount of raw data they've managed to get over the last few days of LAN, they can now go and correct individual plays and individual player mistakes one by one, rather than those mistakes coming in when the players would have been learning agents at like let's say पहले वाकले को नियॉन पे डाला, okay वाकले नियॉन गुड, देन एस को ब्रिम पे डाला, इसको ओमेन पे डाला, इसको वाइफर पे डाला, okay these agents good. तो वो स्टेप बाय स्टेप करने की जगह पे सब कुछ को एक ही कर दिया, तो भी जो भी इंडिविजुअल प्लेयर मिस्टेक कर रहा है वो तुम इजीली रेक्टिफाई कर सकते I हो. understand. मैं वही करता हूँ ना. हाँ. But I'm saying VLT का इतना बड़ा टूर्नामेंट ये सब जो है. Yeah, maybe okay. I'll agree. It is too big of a risk to like switch these big of roles this soon, maybe. But No, I would have done the same. Because Malav and CA know me, मैं वैसा ही हूँ. I would do the same because for me long term is better, right? yeah, long term. For me long term outweighs the short term. अगर मेरे को long term में फायदा होगा तो मैं वो अभी करूँगा. मेरे को फर्क नहीं पड़ता. Unless and until the owner and the team wants short term, they want to prioritize short term, which is why जो भी टीम मेरे को अभी ऑफर देती है, my questions are how good is your team, how good are your players, what are your short term goals, what are your long term goals. ठीक है. ये 4 क्वेश्चन पूछता हूँ मैं और फिर I generally do a trial of 2 to 3 days with the team. So what I do is उसमें मैं बस ये देखता हूँ कि ओनर को कितनी समझ है अपनी टीम की. ओनर ने अगर बोला हाउ गुड इज हिज टीम, वो कितना सही है. हाउ गुड आर हिज प्लेयर्स, वो कितना सही है. ओनर के शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स प्लेयर्स के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स से कितने मैच होते हैं. आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं भाई ये करता हूँ. मेरे लिए आई नीड टू नो व्हाट द ओनर्स प्रायोरिटी इज. इफ द ओनर्स प्रायोरिटी इज शॉर्ट टर्म, दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी एट टीम एरो ना. मेरे को नहीं पता था ओनर की क्या प्रायोरिटी थी. मेरे को लाया गया बोल के कि तुमको लॉन्ग टर्म मिल रहा है 3 महीने. तुम मेरा जो प्रोजेक्ट है 3 महीने का, which I think so I've told you and CA ना कि how I go about, I have a 3-month project. तो मेरे को बोला गया वो 3-month प्रोजेक्ट, तो मैंने उसी हिसाब से किया. बट उनका अलग था. When are you coming to our Candy Crush boot camp? We need to practice for next official. या सक्षम, मैं वहीं हूँ. शटर देख, शटर खोल, मैं अंदर ही बैठा हूँ. Who do you think has done the best clutches in India वाला scene? IMO Lightning Fast best clutches. What do you think मतलब? भाई बहुत वाइड क्वेश्चन है यार ये तो. बट अकॉर्डिंग टू यू, अगर आंख बंद करके तुमको एक क्लच बोलेगा, तुमको किसका चेहरा नजर आएगा इंडिया में? एक क्लच मतलब नो बेस्ट क्लचेस. तुमको क्लचेस वर्ड से किस बंदे का नाम मतलब चेहरा नजर आता है? I think probably not most number of clutches, but a person who's done them when required most, Bhavin. I think Bhavin's done some clutches for us when we needed them the most, and he stepped up a lot. But I think otherwise, overall, I won't say one particular player, but I will say Raleigh can cross that were the 2 clutch masters. Like when they used to play together, 2v3s, 2v4s, लोग दोनों निकाल लेते थे, कुछ भी करके दोनों साथ में रहते थे, निकाल देते थे. So for me, it's the both of them. I'll be very honest, मैं आंख बंद करता हूँ, क्लच के नाम पे आरबीके. ठीक है. Yeah, you could say RVK is also there. ठीक है. But it's also, if you look at in terms of raw statistic, RVK might not have the highest number of clutches because obviously playtime is a lot lesser compared. Yeah, but like percentages, he has Yeah, the 100%. highest. Because I remember going into it, even in the SCS, right? RVK had the highest number of clutches and the highest percentage, I think, followed by DM, who had the second highest number of clutches. Yeah. Which is a very shocking fact if you think about how DM used to play Jet. And compare that to his chamber. True. Where he's coming into these clutch situations so much more. And he's also clutching as well, right? Yeah.
And I think then the best clutch recently has to be Hellf's Fracture Sage clutch. oh ho 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 That's the best ho. clutch. But again क्लच देखो आई टेल यू अगर एक क्लच बोला जाए ना Yeah. एकदम एक क्लच द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्लच कप्पा वाला था 1v3 वाला Yeah. डेफिनेटली राइट Split one or स्प्लिट वो 1v3 इट्स नॉट ग्लोरियस बिकॉज द अदर टीम मेक्स मिस्टेक्स राइट yeah. बट द इम्पैक्ट Oh, that game. वो एक राउंड पूरा बदल गया उसके ऊपर एनीमे बना सकते हो Very important clutch for us to win that one was. if RNT is the protagonist of an anime, in a sports anime, that is very good for their progression, right? Yeah. And similarly, now that was the first time. The second time is 12-11 wala, right? Icebox. No Haven. Yeah. Even Icebox, that Enigma के सामने जो कप और इससे निकला था. No, I'm saying for RNT, Revenant. अच्छा. If RNT is the protagonist, let's say जैसे हाईक्यू में कारासुनो है, तो पहला डिसअपॉइंटमेंट वहां पे हुआ जहां पे 1v3 क्लच हम जीत सकते थे हार गए, ठीक है, उसके वजह से फिर भी बंडल डाउन, राइट. सेकेंड अभी 12-11 में है ना, True. दे केम बैक ऑल द वे और फिर उसके बाद स्प्लैट, राइट. क्यों? प्योर एनिमे. लोगी को रिकॉन दिखता है, लोगी रिकॉन पे गोली चलाता है, रिकॉन पे गोली लगती है, रिकॉन नहीं टूटता है. Yeah. इट्स प्योर एनिमे गाइस. Just unfortunate. अगर वो टूट जाता तो साइड में एम्बर था, वो स्पॉट नहीं होता. स्पॉट नहीं होता. बता कि विम्प था. विम्प होगा शायद. हाँ, स्काई था ना विम्प. स्काई था. हाँ, और अगर एम्बर तो पहले ओमेन से टीपी करते करते मर गया था उस राउंड में. हाँ, फ्लैश निकाल रहा था अल्टीमेट. उसके बाद पीछे करते करते पीछे आते आते फ्लैश निकाल रहा था. गन नहीं आया टाइम. एंड अगर वो नहीं होता तो गोलू नेवर चेक्स राइट उस समय, नेवर, बिकॉज गोलू वाज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट. उसका पूरा पीओवी लेफ्ट की तरफ था बिफोर द रिकॉन स्पॉटेड और टिक किया. भाई समर्थ को बैन करो कोई चैट में से प्लीज. समर्थ, this is सबसे अच्छा not क्लच 5k का तो बस दर्द होता है. this is, I don't think this is allowed as a conversation. बट कारासुनो कभी नहीं जीती. दे लूज टू दैट वाइट हेयर शॉर्टी. सॉरी स्पॉयलर्स भाई, मैं पूरा मंगा पढ़ चुका हूँ. फ्लेम ओपी. अच्छा, आगे देखो एंड लूज क्या. या दे लूज वो जो जिसको लिटिल जायंट बोलते हैं. एंड अभी ये जो बंदे हारे हैं ना कारासुनो से, जो the twins. हाँ the twins, they go on to win the next one, Okay. the next tournament, and then Karasuno comes I think so 4th या 3rd. और ये वाला टूर्नामेंट बोकुतो वाला जीतेगा. Okay. So the anime doesn't have a happy ending technically. No, it has. उसके बाद है like वो लोग कुछ- because anime का protagonist is तो हिनाटा ना. Yeah. It's not Karasuno, it's Hinata. So then Hinata जाएगा, Hinata ब्राजील जाएगा सीखने and all, and then ब्राजील से आके ब्राजील में वो सीख के he's now become the best player in the fucking world. Wow. Insane. उसका पूरा प्रोग्रेशन ये सब है, ठीक है. एंड देन वो आता है इधर, तो इधर जापान में लीग चल रही है तब उस समय, बिकॉज वो सब जो बच्चे थे सब बड़े हो गए हैं ना. और वो लीग में जो सेकंड टीम है, जो फर्स्ट टीम है उसमें वही सब है, सारे बेस्ट प्लेयर्स हैं. सेकंड टीम में उसमें थोड़े आउटकास्ट, मतलब जो बेस्ट थे पर बेस्ट के जस्ट नीचे वाले थे, वो सब. Correct. जैसे वो जिसको जर्म से डर लगता है, याद है, हाँ. जो पहन के घूमता है, वो सब, ठीक है. और वो है जो बोला था ना कि आई विल सेट फॉर यू, इधर जो मिया ट्विंस वाला, मिया सुमो. भाई इतना तो याद भी नहीं है, कितना टाइम हो गया. बट भाई- हाँ, नाम याद नहीं है बट याद है कि क्या गाइस मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, ठीक है. एनिमे का 14 भी हो ऐसा. is the vibe Exactly. they're giving off right now. बिल्कुल एनिमे का चौथा. मैं लोगों को समझाता भी हूँ एनिमे के स्टाइल में. मैं जो मेरा सेंटेंस है, कॉन्फ्लिक्ट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, दैट इज फ्रॉम हाईक्यू. मेरा ट्विटर का भी स्टेटस क्या डिस्क्रिप्शन इज फ्रॉम हाईक्यू. नेकोमा का जो कोच है ना बुड्ढा, हाँ. वो बोलता है जब नेकोमा और उसका, जब कारासुनो वो ट्रेनिंग कैंप के लिए जाती है जहाँ हाँ. पे हिनाटा थोड़ा लड़ने लगता है कि उसको आंख बंद करके नहीं करना है. और Yeah, got it. सॉरी, मैड सेंटेंस आई नो, बट apologize. Look at my Twitter का ये क्या बोलते हैं उसको Also, description मतलब में. congratulations, 1000 फॉलोअर्स हो गए थे कल. Yeah, I मैंने know. कल stream I पे said देखा thank you to you yesterday only. Thank घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे को, बट थैंक यू टू चैट. साले फाइनली सुन लिए. वॉलीबॉल का एनीमे. हाँ,
G3v1 F4Q first season IQ. What the fuck? भाई ये straight up toxic लोग है हाय भाई. हाय. Actually, Master Troller Godspeed's this thing is 1.5 years from now. If you keep holding on to yesterday, what are we going to be tomorrow? Yeah. भाई मैं एक बात बोलूं, ये बंदे को देखो. Yesterday you were the defeated. What have you become today? True. अंजर जैसा दौड़ता है मेरे जिसमें ये सब पढ़ के भाई. गॉड स्पीड भाई क्यों ब्रोकन भाई ये सब अलग. आई थिंक सो मैंने ट्वीट किया था. आई डोंट नो अभी मिलेगा कि नहीं. जब मैं हारा था और उस समय कि क्या want to be the best coach in ऐसे कि वो तो किया था. वो तो फिर हटा दिया. देखो क्या जो अचीव हो जाए फिर वो हटा देना चाहिए. ओहो. अगर मैं अपने बारे में कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगा मेरे को तो अपने से ट्रू रहना पड़ेगा. हाँ true होता है ये. Which is why like you should always believe yourself. Like no matter वेरी ऑनेस्टली मैं भाई ऑनेस्ट हूँ. पीपल अरे जीवन क्या सीन. बट सिंपल सी बात है मैं ऑनेस्ट हूँ. मैंने सीए को ये बोला है, शायद मलक को भी बोला है. या मलक को नहीं पता होगा. मेरा वो गोल था और अभी मेरा गोल एक ही है. लॉन्ग टर्म गोल. आई वॉन्ट टू होल्ड दैट मास्टर्स ट्रॉफी same. एंड आई डू एनीथिंग. मैं उसको अचीव करने के लिए मैं कुछ भी करने तैयार हूँ. एंड आई बिलीव इन मैनिफेस्टिंग राइट. True. आई बिलीव इन मैनिफेस्टिंग फ्रॉम बहुत छोटे से मैं करता था. बीच में मैंने बंद कर दिया था और तभी मेरी जिंदगी खराब हुई थी भाई. to be honest. और मैं रोज सुबह मेरा फोन का लॉक स्क्रीन इज द मास्टर्स ट्रॉफी. सुबह Oh, उठ के सबसे damn. पहले मेरे हाथ में वही जाता है भाई. बहुत चीजी लगेगा तुमको पर मैं ऐसा ही हूँ भाई. आई फाइंड माई मोटिवेशन थ्रू ऑल दिस. Fair enough. सुबह उठ के सबसे पहले चीज मैं वही देखना चाहता हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ. सो आई एम रिमाइंडेड एवरी टाइम. एनीथिंग. अरे भाई दलील कर दूंगा मैं तुम लोग को. अरे नहीं like स्वागत. I'm not being serious about you being toxic. I'm just laughing कि like भाई बहुत funny हो गया. मजाक कर रहा हूँ. मत. कहाँ It's है? just हम लोग कब हारे थे भाई? बहुत टाइम हो गया ना हारे हुए. so, आई होप ये भाई यहाँ से seems the curse follows me everywhere. भाई बहुत अच्छा. बहुत रोया था मैं उस दिन. sad 2-0 था. 2-0 हो तो- जाता VLT में उस दिन. बहुत रोया था. तो सैज था एकदम सैज. मतलब मैं अपने प्लेयर्स के सामने कभी अपने इमोशंस नहीं दिखाता. ठीक है पर बहुत रोया था. आई होप वी एंटरटेन यू दो. डोंट वरी वी होप टू एंटरटेन. इट वाज ट्रू. हमने एंटरटेन तो किया था भाई लास्ट गेम को छोड़ के. कास्टर्स का आया ये वो. पोकेमॉन कैरिगन. हाँ द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स. लेट अस बिलीव अ लिटिल. भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सेंटेंस सुन के मेरे को. एकदम द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स. ट्रू. फिर भाई गॉडस्पीड भाई वीटो कर दो अभी ताकि मैं भी जाके प्रेप करूं बाद चलो में. हाँ सॉरी भाई. नहीं आइसबर्ग्स ब्रीज. ठीक है. ऐसा एक्सपीरियंस. आई थिंक सबसे पहले ईजी का रहेगा ना. लेट्स अज्यूम. Yeah, last time they picked first, but I'm not sure if that happened because of a toss or it's just that they had a bracket advantage. EG But split. do you think they'll pick split? Yeah, definitely first no. Godspeed VLT आ जाओ. They have sleepy यार. They have sleepy in CA. मतलब मेरी क्या ही जरूरत है. I don't think इंडिया में किसी टीम को मेरी जरूरत है. मैं खुश हूँ यार. मैं जाऊँ. हाँ बताओ मतलब. What will you pick? भाई मैं तुम्ही से पूछूंगा तुम्हारा पिक. Probably Bind. I think Bind is the perfect pick against them. Yeah, today. Sure. Bind, then their pick, then they'll probably pick Haven, I think. Yeah, I think they'll pick Haven. You guys pick Fracture, right? And then Ascent Decider. And Triple Initiator. Yeah. But I still think they have one Ascent comp that they aren't showing. Oh yeah. Curiously enough, मैंने ये बात बोली थी. Yeah, that they'll have an Ascent comp that they're not showing. Yeah. और जब मैंने बोला उन्होंने वो प्लेन वनीला कॉम चिपका दिया असेंट में. अभी तुम लोग के अगेंस्ट या VLT के. I don't think against us they'll play that same vanilla Sage Cypher comp.
Let's see. Ascent में That comp is they beautiful. have a Yeah. That they comp is have, beautiful but trash at the same time. I mean it's a cheese comp. मतलब Yeah. right now, मतलब obviously they'll be able to, yeah, they got the advantage of a bracket. Godspeed for Masters, guys. भरोसा करो T69 जीतेगी. Yes, T69 Godspeed XG. अब मैं एक चीज बताता हूँ, हम ये कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, T69 के प्लेयर्स को पता भी नहीं है मैं कौन हूँ, और जिनको पता भी है वो ये बोलते हैं कि ये कौन चूतिया है, ये कहाँ आ गया इतने दूर तक. मेरे को ये बात पता है, ठीक है, मैं तुम्हें मुंह पे बोलता हूँ भाई, ऐसे हैं, ठीक है. Cruiser mood भाई. क्या लिखा है? मैं भी वही करूंगा आज से. अब संडे है वो, ये मेन Let's में go. मॉड का हुआ. अरे भाई सिंपल सी बात है, T69 हो या और भी बहुत सारी टीम्स हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ, जिनको पहली बात तो पता नहीं है कि मैं कोच हूँ या कुछ है, या वो पता भी है तो वो यही बोलते हैं और सोचते हैं कि भाई ये चूतिया पता नहीं कहाँ से आ गया, कैसे ये कैसे कोच करेगा, या ये कैसे कोच कर. सिंपल सी बात है, मैं जानता हूँ, लोग बोले नहीं बोले मेरे मुंह पे मेरे को पता है, और मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता इस बात से. अगर अगर कोई आदमी ऐसा नहीं सोचता है, मतलब को पता है, सबको पता है, आई हेल्प सो मेनी टीम्स यार, मतलब True. आई हेल्प सो मेनी टीम्स, आई हेल्प टीम्स फॉर फ्री कितने टीम्स को, बट दैट इज द हार्श ट्रूथ. सिंपल सी बात है, पीपल डोंट नो, और मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं लाइमलाइट के लिए नहीं हूँ यहाँ पे. मतलब आई एम हियर बिकॉज आई वांट टू बी हियर. मैं ये नहीं हूँ कि अरे मेरे को मैं 100 के सब्स, ऑब्वियसली अच्छा लगेगा हो जाए तो, बट नॉट एट अ कॉस्ट ऑफ मी लूजिंग माई ऑनेस्टी. आई थिंक माई ऑनेस्टी इज माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ. मेरे को कोई पसंद करे नहीं करे, मैं ऑनेस्ट रहूंगा भाई. सिंपल सी बात है, मतलब को पता है मैंने ऑनेस्टी के लिए क्या बहुत कुछ खोया है, और मैं और भी चीज खोने को तैयार हूँ ऑनेस्टी के लिए. आई थिंक ऑनेस्टी इज द बेस्ट फकिंग पॉलिसी. True that. बिकॉज तुमको आज बुरा लगेगा, आज मलफ को पता है, मैंने मलफ को भी बहुत बार क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, But पर मलफ को पता है कि मलफ को आज बुरा लगेगा, कल उसको समझ में आएगा कि उसको क्या मिलेगा मेरे को बता के. तो मे बी ही मीन्स गुड, ही मीन्स वेल, और इवन इफ इट डजंट मीन वेल, एटलीस्ट वो मेरे मुंह पे बोल रहा है ना. सिंपल सी बात है ना. मतलब दिस इज वन थिंग आई कैन से, कि मेरे को पीछे बोलने से अच्छा इट्स बेटर दैट आई टेल यू अपफ्रंट. वेयर डू यू वर्क? स्पिनर? आई डोंट वर्क एनीवेयर. आई वर्क एट BlueStacks right now, but I guess going to be leaving soon. Yeah. Why not RG again? I would love to be at RG. I'm just more ambitious now, Ripper, and I don't want to sound egoistic when I say this. I always respect RG, इसलिए मैंने उनको यहाँ पे हेल्प किया और अभी भी हेल्प कर रहा हूँ. Just my ambitions are greater. I know if I keep coaching is यहाँ पे and ऐसे, I will never achieve my aim. So I have to do things, maybe things that are a risk, but I mean आज तक बिना रिस्क के किसको क्या मिला है भाई, unless तुम्हारे पास पुश्ता नहीं जाएगा तो फिर भी वो रिस्क रहता है ना. True that. तो वही नेपोटिज्म की बात आती है ना, मतलब I have a very weird take on nepotism. Which is? Just like, yeah, they get chances, right? But I think they're more harshly judged than others, right? So in a way, it balances out. Yeah, they're getting more chances, but they're also under the scanner more than, let's say, other freshers. True. So I think so it sort of balances out. And it's the same thing with money. जिनके पास पुश्तैनी जायदाद होती है, उनके पास हमारे जैसा वर्क रेट नहीं मिलता. बहुत रेयर है. हम खटने को तैयार रहते हैं भाई, हम जैसे मिडिल क्लास लोग. ये तो ज़्यादा ही डीप हो गया. मतलब मिडिल क्लास वैसे नहीं बोल रहा हूँ, बट लाइक you know that to someone who wants to be independent, everyone is middle class. Everyone who wants to be independent right now is middle class. Fair enough. Because I classify middle class as someone who can eat twice a day, has good clothes and has a roof. वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में नहीं जाना है, लोअर अपर क्या होता है. यू आर नॉट पुअर इफ यू हैव दीज थिंग्स, बिकॉज एटलीस्ट 70% ऑफ इंडिया डजंट हैव दीज थिंग्स. Fair enough. तो ये वीटो है, ओके. अगर ये वीटो रहा तो डू यू फील GU इज गोइंग टू विन?
I think split I'll give it to EG. Okay. Okay, this is my personal, let's say, veto. EG split के बाद you chose bind, right? I think Yeah. that is very fairly GE. I think well. Mhm. And then क्या था? Haven. 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 Interesting. Haven is very interesting. I think I'd still give Haven to EG for tomorrow. Yeah, the Fade comp and this thing, they have a good playstyle around that. Yeah. Ascent, I'll give it to G. Hmm. Fracture, I'll give it to G. Very simply. I think G's fracture is good. It's just that I think for थोड़ा confidence वाला issue है या कुछ. I'll jinx again, so I'll say G wins 3-1. भाई इस बार तो सही में होने वाला है 3-1. I feel. Tomorrow match at 5, yes winner. Did you see Abdur put out LFT tweet? Why is Park team not able to stick? Abdur was playing so good. Yeah, maybe they are bringing in someone else. Maybe they are bringing in soulmate. Maybe they are bringing in someone. भाई वो Different. FPG रोस्टर के साथ कुछ हो रहा है जो मैंने सुना है, जो सुन के मैं थोड़ा शॉक हो गया हूँ. DM मतलब. DM you? हाँ, DM बताओ भाई. Wait, I'll also message you. वो मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे को मैसेज कर. मैं कहीं. हाँ, I messaged you. हाँ, wait. I'm surprised you haven't heard. Oh, that is okay. Which is, so then, So then, I mean ये तो पता ही था. but अभी उतने players है भी क्या उनके पास लाने के लिए? हाँ हाँ है. एक का तो नाम मुझे मालूम है. Message. I'll tell you if that is. Yeah. और the other guy. But उसका भी I don't know like the decision क्या है finally. But it's one of the two. तो और but No, the thing is, they have a good talent pool. ठीक है मतलब. I asked you something. Wait, वाइब्रेट करने दो ताकि इनको नहीं समझ में कि कितने मैसेजेस आ रहे थे. भाई हमें भी बताओ भाई. बता रहे मतलब टू स्मूथ इजीली स्लिड इनटू डीएम्स. क्या बात है. एनी मेंबरशिप टू गेट सच इन्फो. मिलो फाइल Membership. लाते हैं भाई. ये चैनल पे मोनेटाइजेशन नहीं है और आपको मेंबरशिप चाहिए. Rossi is gonna be the first pro WoW player to get 1K first bloods tomorrow. Yes. I'm ये not sure how much that statistic means to him, means to us, it means to anyone in the world. true. I'm sure it means nothing to him. Because it's actually nothing, to be honest. For him, nothing. Yeah. For For us, all of us, I think for everyone analyzing the game or just looking at it seriously, it's nothing. Yeah. देखो भाई numbers एक ही नंबर डिफाइन करती है, वो है ऊपर स्कोरबोर्ड में अगर 13 लिखा हुआ आ जाए. 13 या फिर 15 या फिर 17 या फिर 19 हाँ, या फिर हाँ. 21. सत्संग विद बाबा बजाजदेव एंड महात्मा मलवानंद. क्या है? So this guy is the straight replacement for the first guy, right? हाँ. Because what he was playing, this guy plays, right? बट वो नहीं होना चाहिए वैसे. नहीं Because होना उनके- चाहिए. Yeah, I know. उनके रोल्स बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनका एक प्लेयर एक रोल खेलता है जो एक टीम में एक ही बंदा खेलना चाहिए. Yeah. समझा? मतलब this is my take. Can Soul change lineup too soon? Soul की lineup ही नहीं है भाई. सोल की सोलमेट. Soulmate or who is this guy and that guy? Please elaborate, Mr. Bajaj. बट इसलिए तो पॉइंट है कि दिस गाय दैट गाय में बात कर रहे हैं. Yeah. Exactly. मतलब to move him there. बट मुझे एक चीज नहीं समझ में This आई. guy is this, right? तुम पहले वाले नाम के बंदे को क्यों उठा रहे हो जब तुम दूसरे नाम वाले बंदे को ही सेम रोल दे सकते हो.
Exactly. which is what I asked, but I don't know. I think this guy, right? This guy, this. हाँ Okay. हाँ सबको पता है. हाँ गलत बात है ये. होल जी टीम में रेजर स्ट्रीम. अच्छा बस टीम का स्टार्टिंग लेटर बता दो. टीम तो FPX की बात कर रहे हैं हम. आई थिंक स्लोली पता है क्या होगा. हाँ अच्छा ये मैसेजिंग भी किया. हाँ. ओके भाई फोन में बैटरी भी नहीं 3% है, जाना पड़ेगा चार्ज करने और सोने भी और प्रेप करने भी 5 मिनट के बाद. अच्छा इवेंचुअली. इवेंचुअली ये होगा. रेजर स्ट्रीम. या विल गो. ऑल ऑफ अस विल गो. सबने मैसेज रिट्रैक्ट कर तो लिया. इरेजर स्ट्रीमिंग लेयर के आइजिन का फर्स्ट लेटर इरेजर स्ट्रीम. या गोइंग गाइस. दिस गाय एंड दैट गाय इज दैट गाय. ना सक्षम अब तो मैं इरिटेट हो गया हूँ इनसे. अरे क्या हो गए. वो विल बी लिविंग सून. मे बी RC. आई डोंट नो. बट इरेजर का स्ट्रीम दिख ही नहीं रहा है मुझे. टू रीट्वीट आउट समथिंग या दैट मेक्स सेंस. which is what I anticipate should happen, what I want to happen. If this guy comes, then this guy also comes. Yeah वो तो obvious है कि वो आएगा तो वो भी आएगा. हाँ. मुझे इसीलिए चाहिए कि वो आए और फिर तीनों एकदम मस्त हो जाएगा वो दोनों आएंगे तो. हाँ. And then इसकी जगह ये आ रहा है. Top. And that will be the line. Did you see KRU's comp on Haven? Wow. क्या है ये Okay, comp? when he leave, he removed FPX from his name during phase 2 of tournament. Yeah, you know. So Pokemon has a very good offer. Oh yeah, very good offer. And you know, like when I first found out about it, I was like, why would he leave? But like with the offer he has, it's the correct decision to make. I mean, Unfortunately. it's something that will lead to him realizing his dream. Yeah, it will lead to his career taking the next step, Yeah. like the next big jump. To any player, what is the dream? To be at the pinnacle, to compete at the pinnacle. Yeah. And सोने नहीं गया. इरेजर ने भी स्ट्रीम स्टार्ट कर दी. भाई वो अलग ही आज नशे में है भाई वो. Yeah. But so many people are streaming. Ember is streaming. Buster is streaming. Eraser is also streaming. Godspeed is also streaming, guys. Godspeed पे भी जा सकते हो तुम. उधर तो ऑलरेडी हूँ. By the way, where is HSB these days? Aegon Esports. Pinnacle. NSA ऑफर आ गया क्या? अबे Pinnacle मतलब टॉप पे. तुम्हारे ग्रामर लेसन्स लगाने पड़ेंगे सेक्शन. हल्का हल्का लीक करो जैसे करंट लीक होता है. क्या बात है धीर. वेरी गुड. चलो दोस्तों आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही. मैं भी सोने जाता हूँ थोड़े समय के बाद. मतलब हमारा भी स्ट्रीम करने जा रहा है गाइस. नहीं यार. चलो मतलब थैंक यू for coming in. All the best for tomorrow. Feels bad for Arna. He just did lots of things happening around me. Life, business and esports taking couple of weeks off social media. Yeah, I mean, Unfortunate. very The bad things for Anna, people to be honest. just unfortunate the things people want you to do. Yeah. And I feel bad for Anna because he's been the most emotionally invested owner. Not only emotionally, one of the highest financially invested. Financially, to see, I can say there are many who could have matched him, but emotionally, I don't think anybody could have. Like, Yeah, no one. short talk, ask anything. Talk. Chalo, bye दोस्तों. Chalo, bye. Bye, Godspeed, good night. Thank you for having me. Arre, thank you for coming, my love. You ऐसा कुछ नहीं. you कल can भी come बात in करेंगे. every time. You पक्का, know, पक्का. you कल भी know, बात you can करेंगे. come in every time. पक्का. Chalo, good night. Bye. User disconnected What from your happened to channel. FPX? Any idea? No. Disconnected. Why do people don't want to troll each other in tournament chat? Like there are always some guys on chat who takes trollers serious. होता है. OG Pokemon? No. So true. That's why VLT
हैज द बेस्ट फैन बेस या मतलब तो हर वेदर चेंज होने पे स्ट्रीम करता है विंटर में एक किंग और स्टोरेक्स ऑन चेंबर व्हिच वन यू प्रेफर किंग I think storage can provide more value in other roles. Chacha, goodbye. Bye, Pinku. Me. Search landing fast 12 HP clutch, please. Hi, look. One year ago. FPG, VLT disband पागल हो क्या? FPG disband no यार. What's up, they can, but Hellfighter on that lurk, he's gonna be able to shut down one. The Lightning Fast is gonna be able to take his immediate refrag, but still, it is 3 versus 4 on the map, and they have lost the breach. And without that breach, all of these aggressive pushes are gonna get even harder. But at the same time, Excali, what was that pick? He's gonna be able to shut down one. Hell Ranger gets one, but gets traded out immediately himself as well. RG MW1 ला दो भाई हम तो ले लेंगे शौक से. Trying to clutch out this But नहीं round, मजाक है. and with the spike in his hand, he should be able to down in this. हाँ आज देखूंगा समझ. Very much possible, only if Rising Class plays this one smartly. Have his alarm bot to clear out stairs, but with that fault 9 concussing him, he's gonna be down to this east position. Goes for the ropes push though, takes him kill and gets flashed out, so trying to run away, but the side blast coming out, combined with the full topper. Takes him well, everybody finds the flick, and another! भाई Hell Ranger का चेहरा देखो भाई. Fucking love a hyped up in Hell Ranger. Oh my god, that clutch was insane! Some changes will be made. Still remember this clutch. Yeah, I remember this clutch. How am I check. supposed to break that down? How am I supposed Also, to if we see established gaming community like any, I just found something too good last night. एक बार ID was search even CS:GO holy boost. What the hell did Lightning Fast do? I just told you that, hey, this is very much possible if he plays it smart, and he played it so beautifully. अरे तो फिर give hint on Pokemon और that has become one of my favorite player. हाँ दिख जाएगा तुमको. भाई 28 मिनट के पागल हो गया बिल्कुल भी नहीं भाई. SK Rossi chamber versus DM chamber difference क्या? SK Rossi is much more aggressive as a chamber. DM is more well rounded as a chamber. चलो general देखते हैं. सही है भाई. नाइस नाइस. मीम्स में डालो ये सब. बस एक्सेंट सुनो टीम उनका. नहीं गावे नहीं बाद में सुनूंगा. यो आई फाउंड माय गावे भाई. ट्रूली iPhone 7 बेच के पिस्टल ले लिया और उस पिस्टल से iPhone 13 Pro. डैम. जज एट 10 meters, जज एट 11 meters. क्या बात है क्या बात है. अरे बस एक मिनट देखो एक्सेंट सुनो. हाँ देख रहा हूँ देख. Outfit aim training routine giveaway होगा. My Uber Eats driver saw me playing CS or Royalist room. Text conversation related to Uber Eats. You using M4 F4? Are you using M4 as you thought? Just give me food. Nah, G M4 no food for you, buddy. सही. डीएम के अंदर ही डाल दो वो चाकू. डैम. यूएसए माय टीम ओलंपियाड वी साइन अप फॉर द फर्स्ट टाइम. हाँ ये पुराना जोक है भाई. मीम्स बस मैं ही भेज रहा हूँ ब्रो. एक्टिव हो जाओ गाइस. एक्टिव हो जाओ. थैंक गॉड अमतेश. थैंक यू. तू अच्छा दिख रहा है. हमेशा दिखता हूँ पर कोई देखता नहीं. क्या बात है. मी वेटिंग फॉर RTX 40 सीरीज टू कम आउट सो RTX 30 सीरीज ड्रॉप्स प्राइस सो देन आई कैन गेट अ GTX 60 फॉर अ गुड प्राइस. क्या बात है. मैं फोन भाई ये सब आयुष ने भी भेजा है भाई. सक्षम आयुष ने भी भेजा है गाइस. गाइस प्लीज रिएक्ट टू दिस स्ट्रीम्स. ओके प्लीज रिएक्ट टू दिस स्ट्रीम्स. बोलो these memes ब्रो. पीटा सर्वर बैन कर देगा. क्या बात है. चलो देखते हैं. Hey, what's up guys, this is T-Bone back with another video. In this video I'll be showing you guys about a case opening website called
holyboost.com. A huge shout out to holyboost.com for sponsoring this video. Thank you so much, guys. So also I want to let you know, guys, that I'll be giving away this beautiful Glock skin. So you guys can check the description on how to enter the giveaway. So Lethal Deadly 10 वो वीडियो तो हमने देखा है. Lethal. There is no chance Deadly 10 goes to Lethal. Just use Twitter for memes. Godspeed sir. क्या बात है डीसी? हाँ देखो अगर ये क्या है भाई? let's go. Here we go. holyboost.com. So they have given me $500 in total, 100 for the PUBG and 400 for CSGO. So the website is cool. I kind of like the design. It has a car-based theme. राका का डीसी देखो. राका का डीसी I don't. I am I not like it, there. you know, when you click on a page. Did you guys hear that? That's cool. That's crazy. Okay, so we have official cases, new top 7-day months best top trending newer cases. Okay, so let me try. Any Deadly 10 yes. Cheapest. चप्पल से मारूंगा मैं. बूट क्या मार के दौड़ा दौड़ा के. Good my luck case ये because पूरा रिग था by the way. I Obviously. opened, this is for the first time I'm trying, you know, opening cases on a website. All of I these usually used to giveaways open and ये सब cases जो on videos होते हैं most of them are rigged. Steam cases, the CSGO official cases. All I get is shitty drops, nothing. Oh I get a shitty drops, just Never nothing. got a knife, so let's I see. haven't got a might knife. get something. Deadly 10, what are you Dragon doing, lore, man? who knows? You can actually, you know, make a case as you can drop a dragon lore and some other skins. But I guess still chance of winning is less, I guess, because dragon lore is very expensive, guys. So okay, so let me try some of the Nah, official same deadly. cases. Let me start T69 with Deadly 10 cheap वो होने से मजा आएगा. Eco boost. Oh, nice. Okay. Oh, you can get a knife in this. Let me see the latest eco. Lululululu. Do you think Sky is very bad? G Deadly 10. Okay, I don't see a knife here, but let me do the free. Candy test. Crush is so totally. Yes. Energy somewhere. Okay, Griffin. Thought I was about to hit this one. So let me open the case. Let's see. $1, right? It's okay. What did I get? Pit Viper. Oh no. Ah, shit. 0.80. Okay. Still no profit. Done with. Madam, you this. gave up on your eraser so I need quick. to sell that off. What do you mean? Madam loves me more. Hello. Sell. Please sell it. I don't need it. G Corey कब खेलेगा? Okay, what else? What थोड़ा else? procrastinate तो करने Let दो. me see top trending. Your cases. I don't have any cases. Easy profit. It seems. All I see is shitty skins. No, sorry. Not this. Month's best. Let's see. Any M42 roster leaks? $7 Roster dead. Start with that amount. What is this? Knife luck. Nah, all shitty drops. Sorry, no. I guess I should try the official cases. I still have 399. Good. AK-47. Let's see. Yeah, I need to reduce this sound. Okay, let it. No, fuck this. God Deadly 10. That is a nice. Any newer coming by the way? Yeah. Right? Okay, fuck it. We don't talk about tier Come on, 14. give me that fire band. Is Godel coming? Any updates on them or Evan? I think they tried to, but the Whoa. team they offered. Profit, I guess. Fuck! Profit, bro. I'm gonna keep this, okay. I'm gonna keep this. So I spent $4 and I got AK worth Even ने अच्छे $34. छापे That's होंगे उस समय इस वीडियो से कम $500 से $1000 मिले होंगे भाई. उस समय that was a huge amount. 2018. He had like 30,000 subscribers back then. Who are you, Prerak? I am me. I am GodspeedxD. You can see it in my name. Oh.
2020 VLT journey ends. I don't think so. There are a lot of more tournaments. Hi Prerak, welcome to the stream. I remember I to first match against EXO, split fake, A rush, B rush करके सब God team होने लगे थे. हाँ. Fans are here. I'm out. Bye. Good night, Velocity. Guys, before you leave, please make sure that you like the stream. Please make sure that you subscribe to my channel and you share it among your friends or anywhere in the public or other discords or anywhere on social media platforms. Liking the stream helps the YouTube algorithm push out my stream to wider audiences. Subscribing is absolutely free of cost, helps me grow my channel and helps me hit benchmarks of what I aim to do, or let's say helps me unlock some things. And obviously sharing the stream does both of does both jobs, right? Is Gordon coming back in PC Sports? Yeah, I believe so. Was Heman going to be? Yeah, maybe. Felt like flight captain. Thank you. Cringe Godspeed, bhai. In no way someone came to us and asked you who you were. हाँ skip it. सही है भाई Velocity. जा रहा था ना तू? जाते जाते डैमेज देके जा रहा है. W chat feed. Thank you. So guys, please, it's absolutely free of course. Please consider subscribing. Okay. क्या बनाया है भाई ये? मस्त thumbnail. This is a very good thumbnail. VLT done for? Is there any hope for them? I don't know. Giga chat साइड में होता है. हाँ भाई मैं साइड में दिखा रहा हूँ तुम्हें. साइड में आज तुमको दिखा ही देते हैं. ये लाल देख रहे हो? लाल देख रहे हो? सारे लाल देख रहे हो? मैं तो नहीं कर रहा सब्सक्राइब. मत करो भाई, मत करो. Maybe WhatsApp dude. Skip ads. लाल देख रहे हो? ये देखो. लाल देख रहे हो? कैसा है फिली सुप्रीमेसी? सेम. सही है. गॉड इतना टाइम कास्ट चैनल को दे दिया. सक्षम. ठीक है बेटा. ये देखो रेड, पूरा रेड है, पूरा. हेलो मिट्योर. मोर साइड में. चलो मोर साइड में दिखाता हूँ. मोर साइड में रेड 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 फुल लाल लाल. हाँ भाई सारे देखता हूँ मैं फेस. सिंगलपन बहुत. अरे भाई टेल 5G टेल कर दिया मैंने, और क्या टेल करूं. क्रूजर सोबर्ड हिंदुस्तानी भाव ने तेरे लिए बोला था किसी एक का तो हो रहे. क्या क्रूजर उस चैट में भी है क्या? Was Pokemon very good in CS? Yeah, he's the legend, dude. He's still very good in CS. चलो जाता मैं. Good night. Good night, Vaibhav. Exclamation Discord. Yeah, Naman. Please make sure that you join the Discord. Please make sure that the Discord को active करो guys. Please. तहे दिल से गुजारिश है guys. Legend तो वो थी. Unfiltered Twitch कब? भाई अब तो YouTube भी unfiltered ही करता हूँ. Anime recommendation apart from mainstream. Quick. Run with the video. I'll show you. Run with the wind. Only fans का क्या बात है? Check memes. भाई memes में हर हफ्ते चेक करूंगा, हर रोज नहीं. हाँ यार हम मीम रिव्यू करेंगे पूरा. अभी के लिए ठीक है भाई. ये सब मत डालो जेसन जो भी है. टीमोन जो बेटा. टीमोन की शादी बना. हाँ आप देखते होंगे ना, आपने देखा है ना? हाँ ने मोनेटाइजेशन होगा.
मजाकी है, खूब हंसता रहता है, हंसमुख है। उसकी शादी है। हाँ, मुझे भी पता है। उससे बोल देना कॉन्ग्रेचुलेशन शादी के लिए, फॉर योर मैरिज। कॉन्ग्रेचुलेशन। हमको नहीं बुलाया, हम भी घूम लेते बैंगलोर। कहाँ पे? बैंगलोर। आपको भी चलना है Oh, क्या? you're a CA, yes, I'm a नहीं CA. ना आया, कहाँ जाना है? वैसे ही बोल रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। अगली बार और ले वो चलेंगे। बघीर और उसका नाम क्या है? क्या ये सब कौन? बोला. बघीर? बघीर। क्या कौन? मनी बोल रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। अगली बार और ले वो चलेंगे। बघीर और उसका नाम क्या है? क्या कौन? मनी। बघीर? बघीर और धोनी को भी कॉन्ग्रेचुलेशन। टीम बेटा। टीमोन की शादी बना। हाँ This anime, guys, ये देखो, बिंग्स को वजीर बोला भाई. बिंग्स का कंटेंट इज प्रॉब्ली द बेस्ट. मैं बता रहा हूँ, मैं बिंग्स का कंटेंट इज प्रॉब्ली द बेस्ट कंटेंट आई वॉच. सीए करना हार्ड है क्या? नहीं भाई. बिंग्स का कंटेंट यूज टू बी वेरी गुड. अभी मैं नहीं देखता हूँ उतना, बट लाइक पहले इट यूज टू बी वेरी गुड. पहले एज इन लाइक 6 months अगो यूज टू बी वेरी गुड. मैं स्ट्रीम्स भी देखता हूँ इसकी टाइम टू टाइम. कैरिंग इजी टू विक्ट्री, ये सब वीडियोस बहुत अच्छा था. स्पेशली दिस रिवाइंड, मेरा दिल मैं रो गया, मैंने रोया था भाई. या बिंग्स टीबोन बेस्ट. बिंग्स टीबोन बेस्ट कंटेंट एवर फॉर मी. चाचा भाई सेंड डूड्स भेज रहा हूँ बंदे. बिंग्स एंड टीबोन मेरे फेवरेट्स हैं. What do you think CMA is better or CA? CA. CMA is not better, dude. Never. T-Bone और बिंग्स का कंटेंट मेरे लिए बहुत पर्सनली मेरे को बहुत पसंद है. बाकी आई थिंक सो डिपेंड करता है. डेफिनेटली बिंग्स. एंड यू हैव टू रिमेंबर बिंग्स की जर्नी इज सो ब्यूटिफुल. बंदा हैज रिजन. बंदा वाज वन ऑफ अस, लाइक 1K 1.5K सब्सक्राइबर्स, and then he's risen to how many? 200K? 211K सब्सक्राइबर्स. बंदे की लाइफ सेट हो गई है, बंदे घर सब कुछ सेट हो गया है. एंड नाउ ही इज फाउंड द लव ऑफ हिज लाइफ. एब्सोल्युटली. कितना कितना अच्छा, कितना होलसम फील होता है. हिम एंड पिंक्सेस टुगेदर एज वेल इज फाउंड द लव ऑफ हिज लाइफ. ही इज फाउंड एवरीथिंग इन हिज लाइफ थ्रू गेमिंग. एंड आई फील like I want to clap for Binks because एक ऐसा टाइम था जब कंटेंट वैलोरेंट में कोई नहीं डालता था. दिस गाय यूज टू इंस्पायर पीपल विद हिज कंटेंट. वैलोरेंट अगर तुम 2020 में जाके देखो, nobody used to produce content like him. Like before part 2 ये लोग वैलोरेंट के बारे में उतना, बिफोर ऑल दिस, वो ईयर बैक और भी पीछे, बहुत पीछे भाई. सी यहाँ पे तुमको रेड्स दिखेंगे, देख रहे हो? यहाँ पे रेड्स दिखेंगे, देखो ये सब. मैं रेगुलर था भाई बिंग्स की स्ट्रीम पे. मैं रेगुलरली देखता था. ब्यूटी ऑफ गेमिंग यार, मतलब हैट्स ऑफ मैन. आई मीन इट टेक्स टू देखा था मैंने, शेड्यूल ये लग गई, ये वो मैंने बहुत देखा है भाई. जस्ट स्टार्टिंग स्ट्रीमर मैंने पिंक्स को बहुत देखा है. एंड आई थिंक सो आई वाज अ मेंबर ऑफ हिज चैनल एज वेल. आई वाज अ मेंबर ऑफ टीबोन्स चैनल एज वेल. फिर वो ऑटो पेमेंट वाला सिस्टम आया ना, तो उसकी वजह से मेरा वो हट गया. नहीं तो मैं ऑटो पेमेंट एक्चुअली मैं ऑन नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ. वॉच दिस होल स्ट्रीम्स. या मैन आई पूरा स्ट्रीम्स देखता था मैं. अरे See, I'm not lying when I say I was a fan of Bings का content, T-Bone का content. मैं एक्चुअल में fan हूँ उनके content का, for major reason. Yo, hello serious. मैं एक्चुअल में fan हूँ इनका यार, इनके content का. पहले Bings के जो पहले के ये सब content थे, Bings को जो persona था, अभी भी है, होगा. अभी मैं देख नहीं पाता हूँ unfortunately. But heaven for you, good for you अब्दुल्ला. Like you should, I mean सबका अलग अलग होता है. For me Bings का ब्यूटीफुल भाई. और पीछे जाना चाहिए हमको. तो अभी 69 के ये सब उसके भी पहले की बात है. बिफोर ही बिकेम बिंक्स, लाइक बिंक्स फेमस. डू गूगल प्ले रिचार्ज? अरे नहीं, मैं कार्ड से ही करता हूँ. इट्स जस्ट दैट
ऑटो प्ले मेरे को पसंद नहीं, ऑटो पे वाला सिस्टम पसंद नहीं है ब्रो. आई डोंट नो हाउ पीपल कैन, बट आई कांट वॉच एनी स्ट्रीम फॉर मोर देन हाफ एन आवर. मैं देख सकता हूँ. इट्स बिकॉज आई कीप वर्किंग वाइल लिसनिंग टू स्ट्रीम्स. तो मे बी यहाँ पे स्ट्रीम खोल लिया, दूसरे टैब में आई एम जस्ट वर्किंग, यू नो. तो मैं वैसे भी करता हूँ. I feel yeah, it just doesn't hit the same anymore, but he gets the numbers to help it. Yeah, Cruiser. I mean, I'm not criticizing him. I just don't watch him now because I don't get the time. Any idea here on coming back? I think he is going to come back, right? Have you seen him? This guy is an inspiration to everyone, including me. I think I'm inspired by watching Binks and how he has risen. I want to one day have maybe the amount of success that he's had while being myself, right? While not changing. It's amazing what he's had. So I think it's easy to criticize people, but Binks, what he has done, like beautiful. तुम सोचो ना, एक T69 जो टीम थी, T69 का लोग मजाक उड़ाते हैं, बट T69 VCC के टॉप 4 तक पहुंची थी भाई. VCC qualifiers के टॉप 4 तक पहुंची हुई है T69. If I can show you. नहीं, ये वाला नहीं, इसके पहले वाला. हाँ, ये वाला. ठीक है. पहला इंडियन क्वालिफायर, ठीक है. वेलोसिटी सामुराई ग्लोबल, ये ठीक है. सेकंड इंडियन क्वालिफायर, ये देखो. टीम T69 बीट ग्लोबल ऑन वन मैप एज वेल. या दे आर वेरी क्लोज. और उसके बाद अगेन एनिग्मा को भी एक मैप हराया था, दूसरा मैप जीत सकते थे भाई. दिस T69 वाज वेरी गुड. ये वही है जिसको मैं T69 को हम बोलता हूँ ना स्प्लिट का, ये इनका ही है. ये लाइनअप का ही था. जेट रेज ओमेन, सेज, आई थिंक सो एक और. ठीक है. वहां पे जेट फ्लावर पे डैश करता था, एस सामी जेट खेलता था, एस सामी फ्लावर पे डैश करता था, स्ट्रिक्स किलजॉय खेलता था और इस टाइम पे, और बिंग्स रेज लेके सैचल करके एल्बो की तरफ जाता था. उनका ए रश का कॉल था. यार मेरे को नंबर्स नहीं है 200 के, वो आई जस्ट I'm saying he is an inspiration. Look at how successful he's become. Streams of Bings, Fatu, T-Bone, Anna, Goldie Bhai playing together was stress detox, and even in total they had 25k watching all together. Batao. I mean, to be honest, I've watched Anna stream, I've watched Bing stream, but I haven't watched other people much. But in that tourney, they were on the easier side of draw. भाई हेलो, हमको हराया था इन्होंने, और हमने F1 को हराया था. कहाँ से easier? They beat Valor. हमने F1 को हराया था. बैक देन F1 वाज अ टॉप 4 टीम. हमने उनको हराया, इन्होंने हमको 2-0 हराया. ऑब्वियसली हमारे प्लेयर्स ने हगा भी, बट दे वर द बेटर टीम ऑन दैट डे. और उसके बाद दे बीट ग्लोबल वन मैप में, दे बीट एनिग्मा वन मैप. तुम जो भी बोलो, ओल्ड एफएस वाज सो गुड, डिडंट थिंक दे रियली नीडेड. आई मीन या, बट अगेन यू टेक गैम्बल्स, इट पेज ऑफ, इट डजंट, राइट? FaZe was a sentinel prediction. I think FaZe got this, man. FaZe got this. Look at this godlike roster. Oof. When Taza VLT join किया था DM. White Horse, man, he's coming back. I love White Horse as a player. उस समय भी lethal था, देखो भाई. Cybele, Hunt FT, Megatron Sting, Savi. T69 was fun, na? But they still made it to top 4, bhai. And this T69 was not for fun. They achieved a lot with this T69. No, I won't say a lot because I think they hold themselves to a higher standard. Pokemon to God, क्या बात. Team EXO, Yodha Esports, B, Webby, Jojo, Only Friends, Team Novas, Exceed, Squad, Red Monk Jr., Reckoning. ये बंदा भी मेरे को बहुत याद आता है. Orange Leaf, Paratroops better. There was no competition when Paratroops were there. I want to say he is constantly streaming for 2 years and from 1 years. Every day 7-8 hours. Success comes with hard work. Exactly, Naman. मैं वही तो बोल रहा हूँ. उसका work rate is amazing. The 16 probably the best version of them. True. Exactly where I watched. And I'm watching Spike's fan. क्या बात है. Spy family is very good.
भाई एड ब्लॉकर एक्सटेंशन यूज कर लो भाई, नहीं यूज करना। ये बंदा मेरे को बहुत याद आता है भाई, ये बंदा अलग ही कैरेक्टर था भाई, अलग ही कैरेक्टर था ये बंदा, मोहित शर्मा। यू वॉच एनिमे या लॉट लीतल तो वो थी बजा में। अरे भाई सक्षम, पाम्पस won a map? What? That to Haven? I think the first God lineup was the best one, Abdullah. I watched Indian CS, but Google article said Trist was top 5 CS. Is it true? No, that is a bloated article. वो तब का आर्टिकल है जब कोई भी नहीं था, वो स्पोर्ट्स की राय किसी का लिखा हुआ है। टॉकी स्पोर्ट में हमने जब किया था 2019 में, जब बंदे थे तो टॉप 25 था, वो टॉप 25 था, टॉप 5 तब था जब कोई कंपटीशन नहीं था। बट या ट्रिस्ट इज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया। स्कारगोड वाला, हाँ स्कारगोड वाला, सिद्ध भाई, सिद्ध आ गया भाई। आन्या है विदाउट DM1, हाँ विदाउट DM1 भाई। ये देखो, दिस इज माय रिकमेंडेशन गाइस, तुम्हारे लिए डाल देता हूँ। ये तो अटका हुआ है। Still Bing gets hit. Who the fuck cares? Do you think Bing cares? My dress up planning? नहीं, मैंने एक एपिसोड देखे थे शायद। Sid always says yes. हाँ यही देख रहा आफ्टर स्ट्रीम भाई। ये देखो, मजाक भी नहीं कर रहा, ये देखो बहुत ही छोटा है, आई थिंक सो। बहुत ही छोटा है, लाइक 23 एपिसोड, एक ही सीजन है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और तुम लोग यार क्लिप कर लिया करो ना, कुछ भी रहे, अगर मेरी स्ट्रीम से तुमको पसंद है, और उसको जाके, मैं अपना कैमरा अलग करता हूँ, थोड़ा हटाता हूँ, ठीक है, उसको जाके इधर डाल दिया करो ना, व्यूअर क्लिप्स में या मीम्स में या मेरे क्लिप्स में। रुको मैं एक और चैनल क्रिएट करता हूँ। डोंट लाइक रोमांस एनीमे, उतना नहीं ब्रो। जी कोच रेजर लीड गोलू एंड स्किल नंबर 5 मिनट बिफोर। कोई बात नहीं यार, गलतियां हो जाती है। व्यूअर क्लिप्स है तो चैनल, व्यूअर क्लिप्स नहीं, व्यूअर क्लिप्स फॉर रिव्यू, ये अलग है। दिस इज फॉर क्लिप्स फ्रॉम माय स्ट्रीम्स। एनी न्यूज़ ऑन कुजूरी? नो मैन। गाइस क्लिप्स लिया करो, ओके प्लीज। मैं इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलता हूँ, थोड़े क्लिप्स हो जाओगे, थोड़ा मैं फट जाऊंगा उससे, है ना, मेरा चैनल फट जाएगा, अच्छा लगेगा मेरे को नहीं? तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा? है तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा? चलो व्यूअर क्लिप्स देखते हैं। 4 बस, ओके। You want to play? Away with you. सामान शेयर्स तो पॉपुलर होंगे स्ट्रीम में, तो क्लिक करेगा। हम अपनी खुद की करेंगे ना, खुद की कर लेंगे भाई, प्लीज कोई कर दो। हेलो कैस्टर,
three. That's three. One enemy remaining. Fantastic. क्या बात है समझ I really am read my chats till we rest till then we rest क्या बात है क्रूजर मैं पढ़ तो रहा हूँ तुम्हारी चैट्स ब्रो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन आवर वे टू गो टू बर्लिन तो है नहीं कोपेनहेगन है बेसिकली 2 टीम्स यहाँ से जा रही हैं एक प्लेन्स में जाएगी ग्रुप्स में जाएगी ग्रुप्स में 8 टीम्स क्वालिफाई करेंगी डबल एलिमिनेशन प्लेऑफ ब्रैकेट में उसमें से 2 स्लॉट्स तो वही है चांसेस बहुत कम है गाइस प्लीज क्लिप करो गाइस प्लीज क्लिप करो और उसको क्लिप्स फ्रॉम माय स्ट्रीम्स में डालो प्लीज फेलो वीव्स वेटिंग फॉर योर एम टेप्स कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई टूर्नामेंट के बाद और मेरा नोटिस पीरियड ये सब बहुत चल रहा है यार मैं बहुत हेक्टिक शेड्यूल में हूँ अभी ठीक है ये सब रिव्यूज के लिए डालने हैं गाइस यहाँ पे तुमको ठीक है एसएमएक्स के साथ तो गलत हुआ हाँ एसएमएक्स के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है तो बात तो सही है watch the rest as the what true what happens if you win APAC if you win or come second in APAC you qualify for Copenhagen yeah watch mine बजाज भाई कभी रैंक वगैरह भी स्ट्रीम कर लिया करो वहां से भी क्लिप्स आ जाएंगी इनफ्लिक्ट वो सब क्लिप्स से मेरे को कोई नाता ही नहीं है आई थिंक सो अभी एसएमएस कोई टीम ज्वाइन किया क्या फिलहाल तो नहीं आई थिंक देयर वर टॉक्स कुछ हुआ या नहीं हुआ 8-bit बंक्स भाई GTR भी एनी टाइम यार मजेदार तो बहुत है ट्रू आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू GTR इज वेरी फन टू वॉच फॉर मी बट आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू रेप्लिकेट दैट क्या हुआ एसएमएस के साथ आई थिंक ही टुक अ लॉट ऑफ या I've heard SMS got kicked from a particular work for being less versatile. No comments. अभी उसमें देखो बाद में स्ट्रीम पर डालूंगा क्या बात है समझ Guys, I think so we should call it a day here. किसने बोला वॉच माइन नमन ओके बस नमन की देखते हैं चलो Spike planted. Flash. Okay, is watching garage. Nice. Half new flash. Okay, takes garage control. Sound किया उनको पता है तो यहाँ पे और इसने नीड वेस्ट किया वापस पीछे जाने का साउंड भी दे दिया ओके तो उसने मारा ओके स्विच गन स्विच नहीं करनी चाहिए One enemy remaining. गुड 1v4 तो नहीं है दिस इज अ 2v4 you've killed 4k but this is a 4k this is not a 1v4 okay technical mistake दूसरी चीज मैं एक चीज बोलूंगा यहाँ पे ये एनिमेशन की जरूरत नहीं है पहले को मार के यू नो कि अभी वो लोग रीटेक कर रहे हैं डिफ्यूज हो गए क्लोज प्रॉक्सिमिटी में और भी प्लेयर्स आ सकते हैं ये मार के ये नाइफ स्विच जो था दैट वाज अननेसेसरी शूटर का एम अलग ही क्रिस्प है पिंग ज्यादा पर भी हाँ भाई विन एपैक इंडियन टीम KW अरे he's just asking question let's watch T1 highlights and more I have watched a lot of T1 highlights चलो इसी पे खत्म करते हैं T1 के हाईलाइट एक देख के खत्म होता है आई थिंक सो लेटेस्ट वाला मैंने नहीं देखा ये नहीं देखूंगा मैं वैरायटी स्ट्रीमर हाँ ये देखूंगा मैं ये देखूंगा चलो ये देख के खत्म करेंगे गाइस ओके अण्णा रिवील तो अण्णा 5 जन ओके Spike. क्या किस्मत है बच्चों ओ भाई क्या लो मतलब अगर वो टीपी नहीं करता तो भी एक तरीके से बचाव रहता है बूढ़े का किस्मत भाई मैं सच्ची में चिल्लाता यूनाइटेड भाई यूनाइटेड फैन टी-बोन इज द ग्रेटेस्ट गाइस यूनाइटेड फैन है भाई इमीडिएटली ग्रेट है भाई टीपी करने की वजह से मर गया चांसेस इज 0 वायर इवन प्ले
नहीं नहीं तन्मय ऐसी कोई बात नहीं, चांसेस जीरो नहीं है भाई, इट्स नेवर जीरो, उल्टा हुआ। हाँ तो क्या गाइस, आज से कब मैंने देखो ये सब बंद किया, मेरे ही है ये सब बंद किया। नेबर आवाज आ रहा है यार, मैक्सिमम मैं जेल जा सकता हूँ क्या अगर मैं चिल्ला रहा हूँ तो? नहीं क्यों? नहीं, नेबर्स ने बोला कि यार प्लीज नहीं, ये बोलते कि एडजेसेंट वॉल मतलब इसके पीछे उसका बाथरूम है मतलब शायद, तो ऐसे बैठता है क्या कि ये क्या चिल्ला रहा है? कितने टाइम तक बाथरूम में हाँ यार, मेरी मम्मी आज तक 6 महीने इधर थी, जब मैं इधर स्ट्रीम करता था एक भी चीज नहीं थी बोली उसने। इसको क्या प्रॉब्लम है भाई? मम्मी क्या बोलेंगे कि तू माँ बहन की गाली देता है, लौट है ऐसा? अरे नहीं, उस टाइम तो हम भाई पारिवारिक स्ट्रीम थे हमारे, याद है। हेटर है क्या वो? क्या कर रहे हम भाई? अगर स्ट्रीमिंग छोड़ दे गाइस, स्ट्रीमिंग छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि आवाज आ रहा है नेबर को। चला जा भोसड़ी के। टीम सुपर चैट सही में भाई। ये सच्ची में मेरे पहले वाला इसमें भी हुआ था पता है, अपार्टमेंट में। ये अपार्टमेंट का RR है बे, मैं इंडिविजुअल घर ले रहा हूँ। गाइस डोनेशन बोल चाहिए, पीछे बैठ दो आराम से, चिल मार के। बीटिंग कर रहा है। दोनों बैक से वन बैक से दोनों मिनट टीबन भाई मारो, टीबन भाई मारो। One enemy remaining. No welcome today. क्यों किया रे? अरे यू सी फ्लैश दो अरे HP क्या मजा आया। ये कौन सा नशा है? ओ भाई फाइनल वापस टीबन भाई वापस। अलग है यार, ये नहीं कि जी को सपोर्ट कर रहा है। हां कुछ और वो बताने का क्या साथ। वाह कितने गंदे प्लेयर। सेज अनइंस्टॉल कर दे मेरे भाई, मत खेलिए गेम। ओके एंट्री ले रहा है। Get out of my way. Out of charges. Here comes the party. तो क्या रेस है भाई ये कैंप कर रहा है मिड पे, जट लेके कौन चल रहा है माधर चोट। वाह मैंने सेशन नहीं लिया। शाबाश बेटा, that's a good शाबाश। टीबन भाई लगा के रखो। तेरा वो आता है, वो पिक करके मार के जाएगा। टीबन भाई इतना गंदा कैसे खेलते हो? क्लियर आ जाओ, क्लियर है आ जाओ। they found my trap. बॉल अप करेगा गंदे प्लेयर। नहीं वाली क्या था? बैकअप देखो टीबोन हे बेबी, बैकअप देख। हे बेबी वॉच मी डाउन। लेफ्ट तुम लोग क्लियर करो, राइट तुम लोग क्लियर करो। अच्छा राइट हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। इधर है ऑलरेडी। ओह शिट, सॉरी। इतनी जल्दी कैसे आएगा? ये शिट इधर ही है। अरे इसकी माँ की आग। वाह यार, मैं भागने वाला था यार। यार ये की कहाँ मिलेगा? क्या ग्लिच हुआ क्या? हेलो, ये ग्लिच हुआ क्या? Do all of the maps look the same? आवाज आ रहा है? ग्लिच हुआ क्या? आवाज आ रहा है? अरे इसके एलवन निकल रहा है। ओ भाई, बैंगलोर में जाके जब हम करके निकलेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? तालियां बजेगी, तालियां। मैं दिल्ली में वेट करूंगा जब तक डोर खुलेगा। मैं आज बहुत खुश हूँ दिल्ली में। ये आज मैं कैंडल लाइट डिनर पे गया बैंगलोर पे और हमने ये लुक अरे यहाँ पे बहुत गंदे, आ जाओ मुझे बचाओ, मेरी बुल मार रहे हैं। बहन चोद मार के चले गए, मुझे ऊपर से मार रहा है वो। बचाओ।
क्या बचाओ फाटू ये मार इसको फाटू प्लीज मार, मेरी गांड मार रहा फाटू, प्लीज फाटू मारना। मैं फ्लैंक कर रहा हूँ। देखो बचा टीमोन, ऊपर उसको रिवाइव कर रहा है, इधर आ। उसको रिवाइव कर रहा है। मेरे पास आ रहे वो, कूद के आ गया वो। नाइस शॉट, दो डाउन मेरा राइट टीमोन क्लोज तेरे सामने वो मिली मार रहा तेरे को। ओ नाइस मौत को चुटकी बजा के। देखो ऊपर टीमोन, ऊपर अरे उसका सिर्फ मिली वेपन है बस, मार लो उसको भी चूज ले फाटू, जो वो डाउन है। जी बात फाटू भाई, जी बात भाई, सेक्सी खेला गाइस, अच्छा खेला भाई, खेला तो। अरे उसे मैंने अल्टी मार दी, मार उसको फाटू। अरे यार मेरा शक्ति कहाँ है बेंचूद? मैं फ्लैंक कर रहा था। क्या कर रहे हो टीमोन भाई? सेल्फ रिवाइव कैसे? चलो मैं सेफ हूँ वैसे। सेल्फ रिवाइव रीजनरेट हो रहा हूँ, टेंशन नहीं। हां सेल्फ रिवाइव। दोनों मर गए क्या? हां वो उसने अल्टी। अरे मादर चोद, इधर चूसना। अरे एक कुछ बचा है, मैं गया बेंच। वो नहीं फाइट कर रहे हैं। हो गए भागो लौड़े। अरे कहाँ भागू? उसको चूसो, पीछे वाले को चूसो, बचोगे। मार दिखेगा। अरे मादर चोद यार। मंगल वाली बेटर है वो, देखो यार वो लड़ रहे हैं। सेल्फ रिवाइव करो। डबल किल बेबी। मार। अरे मार रहा! अरे इसको मार। The return of God Gaming will आज देख लो टीम का। हाँ हाँ जी, किसकी? टैब दबा के। अरे टास्क भी बहुत कम रखे हैं। बात नहीं कर सकते। अभी टॉकिंग है ना। मैं लॉबी लेटर बनता हूँ नेक्स्ट मैच, रुक जाओ। तू बंद कर, ठीक है। एक्लेयर्स रिपोर्ट पे क्लिक करना होता है एक्लेयर्स। कौन गया? एक्लेयर्स नाच रही थी सामने। एक्लेयर्स नाच रही थी सामने। अरे बटन पूरे लाइट अप। I don't know anything। ये बहुत सही। आ रहा होगा तेरे को। इसको बनाया इंपोस्टर मेरे साथ। ए मेरा और एक और बंदे का नाम रेड में है। कौन है वो? दूसरा नाम कौन सा? एक्लेयर्स? दूसरा नाम कौन सा है? बताना है क्या? I know this is. I think I'm feeling this is T-Bone is chasing me, bro. हाँ भाई, मैं तेरे साथ इधर रिश्ता बनाने के लिए आया हूँ। इसके साथ इधर रिश्ता बनाने के लिए आया हूँ। ये मेरे को चेजिंग बोल रहा है। इसको समझा दो ना फिर एक्लेयर्स को। एक्लेयर्स बीइंग एन इंपोस्टर। हाँ भाई लूना, ठीक है, सामने ही मारो ब्रो, ठीक है, सामने ही मारो, रिपोर्ट करो, ठीक है ब्रो, थैंक यू। भाई मेरे सामने मारा राकेश इसने, रिपोर्ट कर रहा है। वाह भाई, हेलो, मैंने खुद देखा मेरे भाई। लूना ठीक है ब्रो, आपको देखा हमने। हाँ वाह भाई, मेरे सामने मार के, सुनो मेरे सामने क्या टीपोन भाई मेरे सामने मार के खुद रिपोर्ट कर रहा है। हम तो चोमटे हैं ना। वाह भाई, वाह 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 वाह। बड़ा हरामी हो बेटा। ये लूना मेरे से दूर रहे भाई। राका को पहला नहीं पहला। इतना गंदा प्लेयर है टीमोन। जी टीमोन क्या टास्क भी गलत तरीके से कर रहा है। क्या हुआ भाई? फेक टास्क इतनी गलत तरीके से कर रहा है। वो मेडवे वाले टास्क में पता है बीच में खड़ा होता है ना प्लेयर ऑटोमेटिक, कोने में खड़ा है। क्या हुआ भाई? मैं उधर वेट कर रहा था ये लूना कब आएगा ताकि मैं उधर से जाऊं।
कुछ भी भाई, ये क्या हेलो? अरे वोट करो इसको। ऐसे क्या हेलो? भाई ये थोड़ी होता है भाई, तो ऐसे खड़ा भी नहीं सकते। स्किप कर दो, स्किप कर मां स्किप करो जल्दी खत्म करो, सेटिंग गलत है वैसे भी। चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। पूरी देश में इसको क्यों बनाया मेरे साथ इम्पोस्टर? सही टाइम पे आया जॉर्डो बना हुआ। इतना ध्यान से कौन देखता है रखा भाई? मैं भी देखता था, मैं भी अमंग अस प्रोफेशनल था। वेरी रियलिस्टिक। कहाँ पे? So I saw the body where we just spawned and I saw T-Bone run away from there first. कुछ भी। चला गलत से। वाह भाई, कुछ भी मतलब ये क्या बकचोदी है भाई? Wait. ये क्या बकचोदी है भाई? You went for the reactor and that thing did not get fixed, okay? Then why were you in the lobby again? साला। You went for the reactor, right? पकड़ा भाई, पकड़ा। हेलो हेलो साइबोर्ग। I don't know. Then why So I did you don't go know. for the lobby again? I When don't the know. reactor I just melted ran around the down. map. No. खुद ही बॉडी रिपोर्ट कर दी। सही मिली जैसे 10 और बंदी चाहिए यार लाइव। I don't know. See, my explanation is I don't know the Yeah. game, so I just run around. So while I was running around, I happened to see a green You know the body. game very well, Zeus. Please don't. I have. Hey Robo, bitch, you know I don't know any of this. मतलब खुद मारो और रिपोर्ट करो और हम पे डाल ब्रो दो। हाय ओपी। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है जूस, ठीक है भाई जूस, ठीक है, थैंक यू ब्रो। मतलब मैं अपने आप रिएक्टर में काम चल रहा है, इसका अलग ही है। साला जूस बहुत हरामी है यार, मिली जैसा 10 फ्रेंड्स चाहिए। बहुत हरामी हो, गेम नहीं पता लेकिन रिपोर्ट करना पता है इसको। हाँ, गेम खेलेगा ये। भाई मुझे कोई मतलब गेम खेलने नहीं आता लेकिन रिपोर्ट करना आता है। ऐसे 10 फ्रेंड्स चाहिए यार मिली जैसे। सीवर गेमिंग। अरे माँ क्या सैबोटेज कहाँ से करूं? अरे शिट, मैं सैबोटेज क्यों नहीं कर सकता मैं? मैं तो डेथ मैच खेल रहा हूँ बे। व्हाट? ओ भाई दो कहाँ बॉडी कहाँ मिली? सब मरे पड़े थे इलेक्ट्रिकल में। मैं 100% गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ, इट्स रोबो 100%। कहा था लेकिन रोबो। एक बात बता, अगर इसने वेंट लिया तो कहाँ से वेंट लिया? इलेक्ट्रिक में बॉडी मिली है ना, इट्स रोबो 100%। नहीं तो ऐसी बच गया। बिल्कुल वेंट पे नहीं थी, वेंट के थोड़ा तो इलेक्ट्रिक का वेंट कहाँ जाता है? कैमरे में। रोबो जी, कैमरा जाता है, कैमरा जाता है। मिली रोबो 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 रोबो, मेरे को डाउट है। अब राका को मार। अरे जीत गए। मारा गंदा हो गया भाई, आ गया फिर से। डेथ मैच खेलो। अरे हाइड ही देता हूँ मैं, हाइड ही देता हूँ। सबसे गंदा कटा किसका पता है? जूस का। मिली थैंक यू सो मच यार, मिली थैंक यू सो मच। मिली जैसा 10 दोस्त चाहिए लाइफ में मेरे को। ये टट्टी है भाई। ये कार्ड वाला मजेदार है भाई, ये कार्ड वाला बहुत स्लो। ऐसा क्या था? मैं सिमिलर था भाई सब कुछ। अंकित और जूस है क्या? अंकित और जूस है क्या? या मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे लास्ट जूस था, फिर वो भाग गया मेरे को देख के। मैं गॉसिप के चैनल पे क्यों आ रहा है? मल्टीपल आइडिया तो रिटर्न ऑफ जॉर्ड गैंग देख लो। हाँ इसके बाद देखो। जूस भी लाइक मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। ये हुई बात, ये हुई बात। मेरा कलर किसने लिया? माटिया। हाँ भाई जूस ठीक है। T1 hacked his channel. जूस ब्रो, भाई जूस सामने मारा ब्रो। And just so Pokemon playing CS, it was so fun watching him play. भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, Yeah. मेरे सामने जूस ने मारा। पूरी भाई, वाह, कहाँ मार के चले गए? हेलो
जूस भाई ऐसे भाई जूस मेरे सामने मारा भाई। वाह भाई। I went straight, okay, and then this guy was complaining about कौन मेरा color लिया. T1 was standing with him. Then I went back and ठीक है, मतलब भाई मेरा भी सुन लो भाई, मेरा भी सुन लो, ठीक है। हम तीनों साथ में तेरा का, ठीक है। ये अपना वो आरआर कर तब कौन मेरा कलर किया, इसने तुरंत मारा और तुरंत रिपोर्ट किया और मेरे पे डाल रहा है। वाह भाई, वाह भाई। T-Bone, it's T-Bone. Oh, let's go, bro. Let's go. डबल किल करना है इधर, समझ रहे हो? मिली दिमाग डाल, डबल किल करना है। मार मार। चोट मिली, चोट। बेस्ट, इससे बढ़िया और कोई नहीं मिल सकते बकरा। भाई अरे पैंचो, अरे अरे वेरी रियलिस्ट। इसको पकड़ लेगा लूना, क्योंकि इसको आता हुआ तो देखा नहीं। डबल किल, डबल इसको आता हुआ तो देखा नहीं। मार 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 मार, अरे मार ना, अरे इसको मार, इसको मार, इसको मार। भाई लूना भी इधर क्यों जा रहा है? लूना को पता टीम मैंने और मिली ने जो खेला ना, मैंने और मिली ने जो कोऑर्डिनेशन पे मारा ना, जूस। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, टाइम टू गो एंड सी यू टुमारो एवरीबॉडी। लास्ट एक वीडियो देखते हैं। कौन सा बोला था? कौन सा बोला था वीडियो? आता हुआ दिखता नहीं है, उतना साइट रेंज नहीं होता मंगस में। अरे नहीं, कैंप्स में वो अंदर घुसता हुआ नहीं दिखाया कभी भी, तो वो प्रकट कैसे हुआ? इसका मतलब वेंट से ही आया होगा। बेटा जॉट गैंग कहाँ है? बेटा नो जॉट गैंग नहीं मिल रहा भाई। ये रहा, मैंने देखा भाई, तुम देख लो सब अच्छी। मैंने देखा भाई, ये वेरी फन, यू वांट टू ग्रेट वॉचिंग, मैंने देखा हुआ है ना। मैं 8-bit गोल्डी, हाँ गोल्डी भाई का भी देखूंगा मैं, बिल्कुल, क्यों नहीं। कभी है कभी नहीं वाला देखा है, अब याद नहीं है, देखा कि नहीं साइबर, टू बी ऑनेस्ट। गाइस ऐड चलाता हूँ फिर से। गाइस प्लीज डू consider subscribing to my channel. It's absolutely free of cost and helps me grow. Please do like the channel, like the stream. Sorry, stream को like करोगे तो ये और audiences को आगे बढ़ाया जाता है। UIT algorithm pushes it to further audiences, and obviously if you share it amongst your friends on Discord, other social media platforms, helps me gain more viewers and in turn more subscribers as well. कंफ्यूजिंग, सर्च करो वीडियोस सेक्शन में। अपसाइड डाउन है सेलेना, जीटीआरपी। अभी साइबर और देखने का मन नहीं है जीटीआरपी, टू बी ऑनेस्ट। जीटीआरपी मेरे को देखने का मन नहीं करता। गेमर्स लाइफ आफ्टर मैरिज, फनी हाइलाइट्स। अब और नहीं देखेंगे गाइस, अब आज के लिए आई थिंक सो 2 बज गए हैं, हम थोड़ा बंद करते हैं आज, है ना। बहुत कर लिया आई थिंक सो स्ट्रीम हमने आज। कल देखते हैं गाइस, हाँ कल स्ट्रीम करूँगा, कल देखते हैं। कल एक नॉर्मल ये BO5 खत्म हो उसके बाद करेंगे, कल देखेंगे। थोड़ा कंटेंट अगले दिन के लिए भी छोड़ देते हैं, छोटा है। कल देखेंगे ना साइबर, मेरे को बस लिंक दे दो ना, मेरे को लिंक दे दे साइबर, अगर हो सके तो। नहीं तो क्या बोला, कंफ्यूजिंग सर्च करना है ना, मैं कल के लिए खोज कर 2 तो रोज़ बचते हैं। हाँ भाई आज थोड़ा लंबा स्ट्रीम हो गया और उसके पहले भी काम वाम थे, तो थोड़ा कल। Yes guys, please do like the stream, please do consider subscribing. साइबर्ग क्या हाल भाई, तुम्हारा एल स्ट्रीक कैसा चल रहा है? सब कुछ सही?
टूर्नामेंट था, क्या हुआ टूर्नामेंट का? आई थिंक योर टूर्नामेंट स्टार्टेड फ्रॉम टुडे ना? कोई टूर्नामेंट था तुम्हारा, आज से शुरू हो रहा था। बाय बाय, कल मिलते हैं। बाय साइबॉर्ग। बीटी ही बीटी है, ठीक है, बात करते हैं मैसेज में। यांशिक तो मेरे करियर में चल रहा है, क्या बात है सक्षम, क्या बात है। पोकेमोन, हाँ पोकेमोन गोइंग बैक टू सीएस को, यस। चलो गाइस, विद दिस थैंक यू फॉर कमिंग टू माय स्ट्रीम एंड इसी के साथ आज का तो ख़त्म होता है गाइस। प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना? मैंने पिछले 3 मिनट में 3 बार बोल दिया, पूरे स्ट्रीम नहीं बोला, ठीक है, माफ़ी। ही इज़ गोइंग बैक टू सीएस में। और एफपीजी कौन ज्वाइन कर रहा है बता के जाओ भाई, वो सब नहीं कर सकते हैं सक्षम। बंदा अभी भी आ गया भाई। चलो ओके, गुड नाइट गाइस, सी यू टुमारो। Thank you for coming to my stream. Thank you for staying. Thank you for making it a fun space, guys. Bye. See you.